नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. A very warm welcome everyone. आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे वरुण आ गया है on this Thursday evening. आपका ही अपना शो लेके द वरुण कपूर शो. हम every Thursday मिलते हैं रात को 9 से 11 बजे के बीच में. Yes, last week मैंने स्टूडियो में आना शुरू कर दिया है वापस after almost 8 months, and now I will be quite regular. Uh, Last week was a special one because we were kicking off, or we could actually start off a little early. So 7 से 9 last time show किया था. But आज का show, it's gonna be between 9 to 11, and it's a really special show again because we have a lot of guests lined up already. And without wasting any more time, I will definitely get them on. But just a little bit of housekeeping tips. अगर आप लोग भी मेरे को कॉल करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी एट 408-934-1310. 408-934-1310. यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं. उसके अलावा आप डेफिनेटली मुझे फेसबुक पे, हमारे सारे पेजेस पे आप देख सकते हैं, या यूट्यूब पे जाके भी क्वेश्चन, कमेंट या कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक अप योर क्वेश्चंस. Tonight we have two set of guests. पहले जो मेरे दो guests हैं वो हैं I would say some budding entrepreneurs, जिन्होंने एक छोटा सा initiative लिया है, which is a very very great initiative. They've started up यहाँ पर especially US में there's a lot of issues, especially जो first generation parents होते हैं उनके लिए to get their kids into the right kind of college, the right kind of, sometimes it's very difficult to even make a choice. Okay, what would be the best choice for somebody as a kid, because they are already under so much pressure, and they are looking for constant guidance. So I think उसी को दिमाग में रखते हुए, I think these budding entrepreneurs came up with this idea, and I'm glad that they are here on the show tonight. And then the next 30 minutes ke baad, we will have a congressional candidate, Mr. Ritesh Tandon, who's going to be talking a little bit about the elections and why he's standing, and we'll get to know more about him. So on that note, let me just get the guest here. So here we go. Hello guys. Hey Sejal. Hey Utsav. Hi everyone. We just wanted to start off by thanking you for inviting us to your show. It's a great pleasure to be here, and we're really excited to tell everyone more about ourselves and our organization. So to start off with, I'm Sejal, and I'm currently a junior at Lynbrook High School in San Jose. And I am extremely passionate about math and computer science, and I enjoy teaching and participating in math and programming competitions. And I'm Utsav Kataria, the other co-founder of Leap to College, and I'm a sophomore at Lynbrook High School, and I'm also passionate about computer science, mathematics, as well as public forum debate and volunteering. Great. So, why don't we get right into it? Leap to College. How did this happen? What's the fundamental reasoning behind setting up something like this? Yeah. So as soon as we entered high school, we realized that there is so much pressure on high schoolers these days, and there are so many decisions that they have to make, from coursework, college admissions, major choices, and what they want to do in terms of career. And all of these things are extremely daunting. Students start to realize that their entire future is dependent on what they're doing in high school. And every decision, every grade, every extracurricular counts. And this is a difficult and overwhelming process for most students. And we've seen these questions trouble our peers who want to make sure that the choices that they're making are setting them up well for college and their future. And I think everyone is a little bit confused about what they should be doing during high school so that they can get into their preferred college. And we knew that there had to be something that we could do to find and share the right answers to these endless questions that high schoolers have. And to solve this pressing problem, we started Leap to College. Okay. And how has the response been? How are students just like you? Are they kind of taking it very positively? What is the response? And how many students, I would say, have you kind of reached out or helped at this point of time?
Yeah, so I can talk a little bit about this. So at the moment, we've reached out to dozens of mentees, and we've already paired dozens of mentees with their mentors. And their mentors, as of right now, they're coming from top college universities in the United States, such as Harvard, USC, UC Berkeley, UC Davis, just to name a few. Okay. I think one important one that looks have left off is also Stanford. I'm sure you don't want to miss Stanford, huh? Yeah. So they're a good mix of colleges, and definitely a lot of students would just like you guys would be looking for guidance. So what are the steps? How do you guys map somebody to a mentor, and how do you kind of build that kind of relationship? You can talk about a little bit about that as well. Yeah, sure. So on our website, leaptocollege.org, so we offer a mentee form, and on that form, you can request a variety of things such as high school course selection, extracurriculars, SAT or ACT decisions and advice, essay review, just to name a few. And there's dozens of other options in which you can select. And on top of that, on our website, we also offer a list of all our mentors and what exactly they specialize in. So from there, you can request your top 3 mentors, as well as filling out the list of what you need help with. And from there, Sejal and I, we best consolidate it, and we best look for a mentor that best suits your interests. Okay. And so tell me a little bit more about the kind of questions that come across. I'm sure you just don't depend on the questionnaire. You also kind of talk to the students as well, right? So tell us what kind of response and what kind of questions do they come up with, and what are the pain points that you want to address through this portal? Yeah, so I think a lot of the main questions students have is stuff like, what courses should I be taking at school, and what extracurriculars should I be doing? Because as high schoolers, we do have a pretty limited amount of time, and people want to make sure that they're spending that time in a way that's preparing them well for college. So those are the kind of most common ones we see. Okay. And what about the teachers? Are you getting a lot of support and guidance from the teachers as well? Because I'm sure they'll be happy that you are getting rid of a lot of work from their shoulders as well. What's the response from some of the teachers? Who wants to take it? So far we've actually just been using mentors. We've only talked to like teachers and administrators within our own school, and they do think it's a good idea because I know that they have a lot of questions. So it's been, people have liked the idea so far. Great. So tell me, on a personal level now, let me ask you individual questions as well. What's your, where do you see yourself in about a year or 2 years? What's your career path that you're pursuing right now? So at the moment, right now, we've been reaching out to outreach directors in Texas, as well as now Northern and Southern California. And that's like just within the past few months. But within a year, we want to be spread out across the nation and just reach out to other states. But the main goal is to target underprivileged schools, because we know they lack a lot of the resources and have a lot of the questions that are being asked right now. Okay. So basically that was from Leap to College. So at this point of time, you definitely want to focus. You're right now, I'm sure with a lot of bandwidth issues and all that stuff, you're focused right now on limited number of schools and colleges. But on a personal level also, Utsav, maybe you want to tell a little bit about yourself as well. Where do you want to, or what kind of courses are you interested in? What are you pursuing? So like personally, I'm very interested in computer science, for example, as well as like advanced mathematics. Okay. So I have access to like teachers and all, but I know like a lot of underprivileged schools don't have this, which is just one of the reasons that we started this. And that's just it for me. Sejal, do you have anything to add? Like from your perspective? Before I go to Sejal, one more. I'm gonna put you on spot. Don't worry. Okay. So basically, do you also have a mentor? And did you find that mentor through your effort as well? So I actually have like reached out to mentors and have like participated with them, just like seeing how, like once we first started the organization, just like meeting with mentors, like seeing what exactly they could do for us, or like what they could offer to mentees. So yeah, I've like talked to mentors before, and like from there it's pretty useful, like from my perspective. Great. All right, Sejal, same questions. Love to hear your answers too.
Yeah, so in a year, I think I'm also similar to Osa, very interested in both math and computer science. So we'll be applying to college this time of year next year. So that's going to be interesting. So just, that's what's looking forward. And again, just math and computer science is definitely where I want to go in the future. Got it. And in terms of leap to college, I haven't talked to mentors like specifically through our mentorship program, but we have been conducting interviews. So talking to them on a personal level during those has also been really insightful. And then also just having conversations with mentors that are not like focused as in like it's a mentor-mentee relationship through leap to college, but more as just like I'm talking to you and getting some advice. But they've always been really helpful and understanding of my questions and the scary experience that high school is at times. Got it. Got it. Cool. I mean, that's a lot of good information as well. Now, let me go a little off from the topic. How has this year been for you guys on a personal as well as from a school perspective? Due to COVID, I'm sure you have been locked down. So how has that impacted your school or your education path? For me personally, I'd say online school it's about the same as a normal school schedule, just like maybe less work because like less number of classes online that can be conducted. So like this other thing is like mentors, of course, or just outside tutors are always helpful because like you always need to cover the extra information. So I think that would be pretty helpful for me. All right, Sejal. I think for me, it's just been very different. I'm not really used to, sitting at home on my laptop 24 hours a day for homework and classes and talking to my friends. Everything is online, which has been really interesting. But I think other than that, it's going okay. There's not too much difference in terms of like what school actually is. It's just very different experience to not interact with anyone else, but just kind of like family and otherwise just on your laptop. All right. So I know. I mean, this year especially has been very, very challenging for a lot of, not only for students but for everyone, professionals as well as, businesses and whatnot. But I think online is the new way. We were already online, especially in US, right? I mean, I can't say about other countries, but I think even the other countries are also kind of moving to this mode of education. But there are a couple of questions coming in, and I'm going to just pick up those random questions as well. How early, what kind of courses and what kind of like these relationships that you kind of help with? The question is, do they have anything for 8-year-old kids? How early can somebody enroll or go to Leap for for this effort, Leap to College? I know it is for college, but do you have anything for younger students as well? As of right now, I think we've mostly been focusing on high school and like 8th grade and up, sort of. But hopefully in the future we can kind of branch out. I'm not sure if you want to add anything to that. No, I have the same perspective. We probably just want to focus on like 8th grade for now, like because like so far like the process of Leap to College is just specifically targeting college admissions as well as high school admissions. So just focusing from 8th grade onwards. So let me again, pardon my ignorance on this because I also happen to be one of those ignorant parents. I have very small kids. I have like 10, 11, 12 years more before they can get out to, the college life. But do you also help in, through Leap to College on, I've heard a lot of essay writing and all the other stuff that needs to happen. Do you guys kind of guide or mentor on those aspects as well through your mentors, or what is the kind of the core process? So like specifically essay writing, that's one thing our mentors offer. But just like for general information, if it's not like for essays, like we also offer like a resources section on our website where we consolidated a list of resources such as counseling services, a free SAT or ACT practice test if anyone's interested in that. It could be just internships or research opportunities that are available for different majors. So just like a general like space of information that can be accessed. Okay. And I'll take a couple of more questions before I kind of let you go. One of the questions is, how did you reach out to those and choose your mentors? What was the selection criteria? So we were just talking to people that are alumni of our schools and people that we knew so far. Now we're also
finding directors of outreach at different schools to find mentors from their school. So we're kind of just branching out through them. So initially, though, we were contacting alumni of schools in our area. Got it. Okay. Let me take this question as well. Great to tap the pressing issue of student help in decision-making process. How do you plan to scale up? Most of the colleges do have those career counselors or counseling. How is your effort different from the rest? So at the moment, right now, since we've just started building upon our organization, in the future, one thing that we want to look towards is possibly partnering with different schools, for example, offering our website or our list of resources as a resource on their website, as well as just pairing up with some college counseling services, just offering them that we know would be helpful to other high schoolers. So I guess we're more of I think what makes us special is we're a one-stop shop where we offer just a list of resources that could be helpful to anyone, as well as our mentorship program, which kind of distinguishes us because online, if you research any resources, you can't find anything that a mentor can offer you because they have direct experience from a certain school and a certain major. Okay. You want to add something, Sejal? I think, yeah, another thing is that it is special because the support that our mentors are providing is more unique, and everyone's high school and college experience is really tailored to them. And mentors can help you figure out from what you're doing, how you can expand on that or improve your profile. So I think that one-on-one experience and talking to someone who has been through the whole process before, especially from your area, can be really helpful because they know exactly what you're going through. Got it. A couple of more questions which are coming in. Are you guys planning to do anything for spelling bee preparation? Although we do not have a resource about spelling bee preparation yet, that's definitely something that we can look into adding on our website. Great. And another question coming up from Ria is, can you share some kind of experiences? I'm sure you are helping out some students already. What have their experiences been? Any kind of good, bad, ugly feedback, anything, you want to share? It's okay to even share bad feedback. I'm sure there are none, but still, anything that they feel could be done better. I think so far the feedback that we've received has been really positive and incredible to hear. Right. And, people a lot of times don't have parental support or school support that's necessarily as tailored to them. And through Leap to College, they were able to connect to a mentor and get the guidance that they wanted and were able to be steered in the right direction. So I think so far everyone has really, they really enjoyed talking to a mentor and they've learned a lot of things. Great. All right. And one more question which I will take up is, do you guys also help with, or do you guys have mock SAT tests as well? Yeah, we have mock SAT tests and ACT tests on our website that are completely free. They're normally from just past years, except we have it free to access on our website, so just easier to use. All right. I guess you guys need to tell me more about it as well, because I think this is a very good point that you brought up. If there are free resources, what other free resources are available, and also share more details around if they need to talk to someone or they need to get in touch with you guys, then what is the best way of doing it? Who's going to say? Yeah, sure. So I can just talk a little bit about it. So our website is leap2college.org. And our social media, if you do want to contact us through that, is just Leap to College on all platforms such as Instagram, Snapchat, etc. And those are the best ways to contact us, of course. And do you have any other ideas, Sejal? Do you want to add on? I think, yeah. So if you're talking to a mentor or something, we are also always available through email, and we will be sending out feedback forms and stuff like that after you connect to a mentor. So, if you feel like you have more questions or want to talk to someone that has a slightly different perspective, we can always help you arrange that. Great. Okay. And, a lot of good comments are also coming in for you guys. And I'll pick at least one of that, which is great kids. Hats off to them and wish them good luck and God bless for all the good deeds you're doing. So, of course, this is something really, really
important as well. Like I said, right? I mean, first generation or even second generation parents coming from different parts of the world, they don't have the necessary knowledge, the information. And I'm sure I'm going to be in the same boat, and I am 100% sure you guys are going to be around that time when I need that help for my kids as well, because we are always looking for. Right now, she is my elder one. I'll say, she's in kindergarten, and I'm already kind of thinking of I need to learn a lot of things, which since I was not born and brought up here, I've not done the same kind of schooling. I would always be looking for that kind of help. So I think you really are going to be the key source, or the providers of information for people like me. But at the same time, I'm sure you have your own kind of future plan as well, your career path. What a couple of things which even people are saying. What kind of was the motivation? What did you feel like? What, in addition to what we are supposed to do, we have to get going. We have to do this because of certain things. What was that motivation that kind of helped you guide to leap to college? I think we just saw so much confusion with everyone about deciding what to do in high school, because it's really confusing. Like, I remember when I had to turn in what courses I want, I would be on the phone with my cousin who's in college and talking to her about what courses I should take. And I was thinking about how people who don't have that access may be really struggling because they don't have someone who's done high school, as my parents are also immigrants and they haven't really done any of this either before. So I think just realizing that people often need someone to consult with about the decisions that they should be making, and that most people don't have that. So that was kind of the idea. Okay. And maybe one last question, since I wanted to give you enough time to share all the details. One more question is, can they walk us through a case study? Like, how do they help someone get to a top college? Do you want to talk a little bit about that? I think they're asking about the process one more time. Okay, so the general process, just getting involved with Leap to College, it just starts up with becoming a mentee, filling out that form on our website, as I already talked about. And from there, after being matched to a mentor, if you need help with, for example, you might be struggling with essays, you can ask for essay review, or maybe resume review, or just SAT, ACT decisions or advice. So once you meet with a mentor, you'll obviously you'll learn something new. And if you ever need more help after that, we don't have any limit or cap on how many mentors you can contact. So you can basically just contact anyone until you're satisfied with what you need. And we hope, we don't have any way of tracking it as of right now, but we want to look towards that in the future, seeing or asking our mentees, what happened afterwards? Was it helpful? Did that help them get into a college of their choice? So yeah, that's the main process. Okay. You want to add something, Sejal? I think, yeah, it's just because we are so new. We only started a couple of months ago. We haven't really worked out, students getting to college part yet, but the mentors are just able to help them with turning in their applications and getting their resume in shape and stuff like that. Got it. All right. So one more time, if you guys can share all the details, how people can get in touch with you, and if there is a possibility of a number or something, or is it all online through the website? Share all the details, how they can reach out to you guys. So everything is online through our website. It's just LEAP, the number 2, then college.org. And if you want to contact us, our email is just leaptocollege.info@gmail.com. If you ever want more info just about it generally. And if you have any specific questions, you can just always contact us through social media, just private message us, for example. And we are Leap to College on all social media platforms like Snapchat and Instagram. Got it. I'm a little interested now. What kind of information will be shared through Snapchat? I might even try you guys there. Sorry. He has to say Facebook instead of Snapchat. So we're on Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, and YouTube. All right, great. I think that was very, very, very informative, and I see my next guest as well, who also happens to be someone who talks a lot about education in and around Silicon Valley. So before I actually let you go, I think I'm going to have him as well, so that he could also
listen in to a little bit about what you guys are up to, and we always need support from not only the IT guys, but we also need some more support from our congressional leaders, from our community leaders, and he happens to be one who definitely is a good mix. Someone who has been in the IT as well as now he's kind of getting into this the bigger role, which is of he always has been a community leader as well, but I would say on a different level and a different podium. So without wasting any more time, let me just have the guest as well, so that before you leave, you could say hi to him as well. Hello, Ritesh. Hello, Varunju. Namaskar. Hello. Namaskar. How are you doing? How are you doing? Doing well. Yeah. Thank you so much for inviting me. All right. Well, you're welcome. And we have Sejal and Utsav from Leap to College. And they were just about to leave, and I saw you, so I thought, why not? Somebody who has, I'm sure, mentored a lot of people in the past. Somebody who's been into the IT industry and made a mark there as well. Would love to hear and give his 2 cents as well to these budding entrepreneurs who are leaping into something, into a new domain, a new field. While their focus is definitely on their own education, but they're also trying to help out. These are our future community leaders, as I call them, right? Exactly. So they have this effort, and maybe give another 30-second kind of pitch to our community leader and see what he has to say about that. Who wants to go? I can start off. I just want to say first that it's really nice to meet you. So about our program, so we are trying to help students in high school by pairing them up with college students or graduates through a mentorship program where they can get advice and just guidance in their journey. And then we also have a comprehensive list of resources and some interviews. And these are all just to help high schoolers, with their high school experience, whether it be through studying for tests or going to summer programs, or learning from the people in their interviews and what they did in high school to help them. Sejal, this is fantastic what you are doing, Sejal, and so I can tell you, because I'm funding the education of 800 kids back in India, and if somebody is holding the hand and guiding them what to do, what is the next, and the resources available to them, it makes their journey so easy and so pleasant. Thank you so much for doing this thing in your early career, and I wish you best wishes. We need the bright, I can say, youth like you who can drive and help others. Thank you for doing that. All right. So that's great. While I continue my conversation with Ritesh, I really have to thank both you, Sejal, and Utsav for making this time. And I would love to have you back very soon, with a lot of more case studies, more scenarios, and preferably, you could always get some of your, maybe the mentors or the mentees on the show so that they can share their own personal experiences as well. And I think that would also be very helpful. And as I saw some of the comments, they are really appreciative of the kind of work that you guys have been doing. This was very, very informative session, especially for Asian parents or the first and second generation kind of parents who really don't know who to reach out to you. And I'm sure you're going to get a lot of inquiries on your portal. So make sure you definitely, I'm sure you're going to respond back, and as soon as you have a lot of people who are enrolled, please get them along with you on the next session. Love to have them, love to share more experience with you. So before I let you go, one more time, just share your details one more time where they can reach out to you, and then we'll see you very soon again. So our website, just once again, is leaptocollege.org, and you can follow us on Instagram or for more updates, as well as on Facebook, where we also post on that as well. Those are the 2 main platforms that we're using. And we are at Leap to College on those platforms. Sorry, what, Sejal? And we are at Leap to College on those platforms. Yes, absolutely. All right. Thank you, guys. It was really a pleasure having you on the show, and I wish you all the very best. And I look forward to having you guys again pretty soon with a lot of more success stories and a lot of mentors and mentees, sharing their experiences as well. So good luck and all the best for your future as well. Thanks for having us. Thanks for having us. Bye. Best wishes, Sejal. Bye. Bye.
All right. So welcome, Ritesh, once again, and thank you for taking time. I know it's pretty late for you as well, and you are a busy, busy man because I think less than 5 days left. How's the like India में जैसे पूछते हैं, how's the जोश? जोश तो एकदम गर्म है, जैसे जोश कहते गर्म है. हैं. Very good, very good. So, in fact, thank you so much, Varunji, for inviting me. Sure. And always, I have a time for our people, our community. So always, I'm standing for you. Yeah. Great. And I'm very happy to see very bright children and everyone. This is what our future is, and this is where actually all children, they should think about the children who are behind, and they can give the hand to them and move them forward. It's amazing, amazing. Yeah. Absolutely, absolutely. So let's start off, with the very basic question. I normally start off with the introduction, but prior to that, I'm gonna just ask you one random question. Being a congressional candidate or just being you, who you are, what's on top of your mind right now? What's the one thing that's going on right now? Today, actually, just one thing on my mind is November thought. I'm just thinking about November thought, how to win that. Okay. And in fact, right now, what I see that how the people are suffering in the Bay Area. You look from the homelessness, schools are closing, everything. I always think that whether I'll be able to help them or not, and to help them whether I'll be there or not. So that's always keep in my mind that we need to be there to help others. Yeah, that's actually very important as well because we are, I think, in the most expensive place in the Silicon Valley, and there's a lot of homelessness. You go to San Francisco, you go to certain parts of the East Bay, South Bay, everywhere you see a lot of people, and now with the COVID situation, it's even become worse. Exactly. And to add to that, the winters are coming, so it's like it's always cumulative, the kind of issues and the problems. Yes. But before we get into those details, again, like I said, the first question: who is Ritesh Tandon? How would you introduce Ritesh Tandon to all the people listening and watching you right now? You can describe me as a public servant. Last 22 years, let me tell you, like 22 years ago, I came to this country. I came here for my MS and MBA from Santa Clara University. And then 12 years I worked for Cisco System. 6 years I was part of the sales team. And then last 1.5 years, I was working on my own stuff. But before even I started my education, I started working for Shankarai Foundation, where my focus was helping the community, helping the underserved people, underserved children. And last 5 years, I was president of UPMA, which is Uttar Pradesh Mandal of America, where we were funding the education of underserved children back in India. And also we are building the daycare for the poor children, because there are many bonded parents. They used to leave their 10-year-old to look after the 6-year. So the life of both the children is spoiled. So what we did is we put the 6-year in the daycare and 10-year can go to the school. So both the kids can go back to the life. And the same way, I was working a lot here in the Bay Area for Latino communities, because there are actually region, Varunji, you will not believe it. There are places right here in the San Jose on 101 and Story Road where the people, they are so poor. They earn the income today and they eat the food today. If they don't earn it, then they don't have food on the table. So I was working with a lot of Latino families, and in fact, many of them, they don't speak English. So landlords and many people, they were taking advantage of them. So I used to fight for those Latino communities. And that's what my life is, working towards a community and doing the job, and then doing whatever best I can. Yeah. Got it. And as we all know, less than a week left. So tell us a little bit about yourself, as in, what kind of, what's your view around certain rules, certain guidelines which are being implemented. Some of the I'd love to know, what's your perspective. You've already mentioned about the homelessness problem, but then there are more other bigger problems as well in our community. Yeah. So you want to talk a little bit about that? Yeah, thank you, Varunji. I can tell you, first of all, I'm not a politician. I'm coming just like one of the person where I see that society is suffering. You already know that when we look into, that how my journey started, Varunji. I used to sign the paper again and again when the community used to bring the paper to me as a president of UPMA.
When my opponent, he has joined the Pakistan caucus and bashing our community and working against us and so many things. So in fact, when I started going more and more deeper, I realized that the things are going very far left. For example, I'll go with a few things and I'll describe to you how Prop 16 is an open race-based discrimination. Today, when we look into the Prop 16, what it's going to do? It is going to repeal the Prop 209. And what is a Prop 209 is? Prop 209 prevent the discrimination. It don't allow any public institutions or government as well as the public sector to include the race factor into the consideration. Everything is based on merit plus some of the other factors, like if any children is poor, somebody is behind, then there are some other factors. Now, Prop 16, which is endorsed by my opponent, it is so dangerous for the Asian American children that today we are close to 39% in UC and state colleges. But when I look into the California, we are only 15%. So as per the Prop 16, once the race factor will be introduced, that means that Asian American children, which include the Chinese, Vietnamese, Filipino, everyone, they will reduce from 40% to as low as 15%. They haven't shared that what is the weightage of the race factor is and what it is, but the number, I'm sure it will go down from 40 to 35, 30, 20. It will keep on going down. I think this is not fair, especially for the hardworking children, Varunji, because what happens is children, those who are working very hard, they will still not get the admission. But the children who are playing and because of the color of their skin, they will get into the colleges. This is exactly like a quota system what we have back in India. And it's very important for all the community to understand. And I can tell you, Varunji, 5 years back, my opponent, he has signed the pledge that he will not sign such kind of bills, but he did it and he endorsed it and he's fighting very hard. Second thing I want to say is today when we look into our Indian community, 600,000 Indian families waiting for the green card. Every day they get up, every day they think about it. I think it's not very fair because when I was here, when I came here in this country, it took me almost 14 years, Varunji, to get the green card. Now tell me one thing, when my other guy who is also in my same group, he came from the UK at the same time on H1B, he got the green card in 8th month. Because I'm Indian, it took me 14 years. I think the system is wrong from the day one, but nobody has raised any voice. They think that, oh, this is how it is designed, but nobody thought of it, who designed this system? Because these are the people who are putting the people behind intentionally. And this is where actually my biggest fight is going to come into picture, where not only we have to remove the country quota, but we need to go beyond. And we need to say that if anybody is coming on H1B, they should not be measured against the country quota. They should be on the basis of work because we are paying the taxes. We are here for US. We are here for the companies. Same way like other guys there. And it need to be the same funnel. Right. Third thing, Varunji, I want to talk about the Silicon Valley job. Today, the Asian Americans, we are mostly in the Silicon Valley job. We are very innovative. Look into these children's, how beautiful and fantastic like project what they are doing and helping the others. This is exactly I like it to grow. But today what happened is last, I can say 10 years, almost 18,000 companies, they moved out of the California. And this thing is going very fast because of the high government regulations, cost. And then when we look into the other factors like all the intervention, government intervention, this is where actually we need to stop this thing. Today, when we look into Silicon Valley, we have the next future. We have to make the next future, which is a bio-Silicon Valley. We need to focus on artificial intelligence, quantum computing, advanced manufacturing, robotics, advanced medicine. We need to bring back the manufacturing right here, I can say, in the United States. There is no reason it need to be sitting in China or any part of the world. When we were depending on the PPE, it was so sad, Varunji, that I think we have not done our job properly. So looking into those factors, we have a lot more work to do, and we need to continue to grow, continue to be innovative. Fourth thing comes into picture. Before I move out to this thing, I just want to mention that today colleges and companies, they don't talk with each other. We need to make sure that the companies, what they are seeing, that 4 years down the road or 2 years down the road, what is required, the same stuff need to be taught in the college. When the youth is on the 3rd year, they should be doing some kind of internship with every companies. And in fact, with that internship,
the youth will know which direction he need to go, and he can start doing more and more studies and angles on that direction. So looking into the angle, looking into the angle, I think Varunji, it's a time we need to stand up. Otherwise, the way it is going and things are going so far left, when the companies are moving out. Let me talk about this immigration part since I mentioned there are close to 4 million undocumented people right here in the California, 11 million in the United States. My opponent, he's worried more about 11 million undocumented to get the citizenship versus the 600,000 families who legally came here working hard, paying taxes. They don't worry about them. Not only this part, they have the bill which is called as H383 bill. You can look into it. It is co-sponsored by my opponent. That bill allows undocumented people who have done serious crime, which can be including rape or anything, they can stay in the United States. They cannot be deported. And I'm talking about such bill. Where are we? Are we in Venezuela? Are we in which part of the world? This is United States, which is like one of the best country, and things are going far left, Varunji. And this is where, coming from the fresh mind and looking everything from the outside, I think it is time to stand up. If we don't stand up today, Varunji, my opponent actually he want to teach more and more Islam in the school, but our books are wrong in the schools. Even I was so surprised. Hindi is not taught in the 8th grade, where you can find from Japanese, Vietnamese, all the different languages which are taught in the schools. So there are many things we have to do and work for the community, Varunji. And I really like to request all the community people, don't look at the party line, work for the people and work for our children, our community. Got it. So a little bit more on those lines, right? I mean, everybody would love to know your opinions around healthcare. What do you have to say about that? So Varunji, first thing I want to tell you about the healthcare. When my opponent and those people, they talk about the healthcare, yeah, they want to have Medicare for all program, which is going to cost about $3 trillion. Yeah, I'm talking about $3 trillion. Now, when we multiple time I ask this question, from where you are going to get the $3 trillion per year, they don't have that answer. Technically, what is happening, Varunji, when we look into the drug companies make a profit of about $80 billion per year. When we look into the insurance companies, they make a profit of about 10 to $20 billion per year. So 100 billion you can save from here with a one platform system. But at the same time, we pay the premium of about $600 billion per year. So 700 billion. Yeah. Now, from where we are going to get the money, they are telling us, my opponent, that we are going to tax the rich. Now, rich people, they make $1 trillion per year. Let's say if we tax 100% rich people, so that total come out to be 1.7 trillion. Still, we are short by 1.3 trillion dollar, and nobody has any answer like how we are going to like bring that money in, and how we are going to work on this. My plan for the Medicare is I want to have the very transparent system. I want to have the system where the cost of the services is very transparent and visible to the people, so that they can have the choice. I like to create the system like small clinic. I like to give more and more incentives, because today when we look into our country here in the United States, anything happens, you rush to the emergency bill you 25,000, 30,000. Look into India and other countries, how nicely we have had the small clinics where you can reach to the doctors without even appointment and can do the things instead of rushing to the emergency for every small thing. Third thing is drugs. By the time the drug comes out, it is from the of by the time drugs comes out, it is already multiplied by 20 times. Now multiply by 20 times, this same medicine, it is sold outside of the United States at much lesser price. We should allow the same company drug import with the minimal FDA issues, I can say, and that will create the competition and will bring the cost of the drug down. Also, we need to have the multiple insurance plans, because today when we look into the plan, everybody is like a one-stop shop.
The youth, they don't need very expensive plan. They can save some money. And also at the same time, the regulations. We have a lot more regulations. When I was talking with Dr. Jhapaji, he told me, Ritesh, any patient I touch, I need to do multiple process before even I can give him any advice or things. Even though I know that it is not required, I need to do it sometime. So if those kind of regulation can loosen up a little bit, I think the cost of the medicine, cost of the healthcare, cost of the insurance, everything can be brought down. And this is where my main focus will be. I like to cut all the intermediaries in between who is making the healthcare so expensive and bring the cost down. And one thing, Varunji, my plan is healthcare for everyone. If somebody is poor, then government should cover it. It's, it should provide it should cover all the pre-existing condition and everything for the people. Got it. Go ahead. Finish your thought. I just want to say that when we work for the healthcare and everything, our main goal is keeping the people in mind and making sure that these companies who are making the money with the high drug costs and everything, I want to chop it down, and I want to make sure that that our people and everyone is covered. Got it. So I'll take up, one of the questions that's come up. Bringing manufacturing company to the US, how do you plan to encourage small scale industries? Is there any plan to address the homeless people through small scale industry? Through small homeless people through small scale industry. It is okay. So first of all, one thing, I'm very sad to see the homeless people today. Out of top 5 cities in the United States, 4 are right here. What I like to do is the homeless people, I want to create the center. The center will be such that the homeless people, they can have 6 month or 8 month of program. Under that program, we have to give them the mental treatment. Under that program, we need to take care of their health. We need to bring them back to the regular life. In that program, I like to include all the, I can say, doctors, the volunteers, the people who are serving the food. I can say we have the good plan on those angles. At the same time, I like to invite industry experts and even teachers also to give them the training. And with that training, I like to leverage all those people, homeless people who are getting back to their life. I want to give them incentives to the companies to hire them, as well as the US companies, which we are planning to give the incentives like other tax breaks and everything, further incentive to hire those people and bring them back to the life. This is where actually, Varunji, homeless people, they are not by choice. This is a condition which happen. And today when I look into our government, they are throwing the money, they are giving them drugs, they are opening the center where they can put more needles in their bodies, and they are actually playing with the life of the people, so that homeless people, they can be remain drug and lying on the one corner and they will not make any noise. No, it's not fair. Everyone has one life, and we need to work for the people, and we need to help them, explain them. And I know that, Varunji, 20% of the people are not going to come back. So for that, we have to plan it out in such a way that they can live and enjoy their life. But at the same time, 80% of the people, we need to bring them back to the society. Got it. Okay. One of the bigger challenges this year has brought up is COVID, right? A lot of people have lost their jobs, and then the additional pressure of not being able to continuously work because of COVID. They have been locked down at homes, and jobs have been lost. Companies are laying off employees like anything right now. What is your plan? What do you see as a kind of a economic revival plan, if I could call it? What is your take on that? Be it from a professional, like a job perspective in IT and all that, versus also the small medium businesses. What's your take on that? So first of all, I want to tell you, Varunji, that when this COVID happened, nobody was aware like how serious it is. But today, when I continue to ask the questions to our governor and the California, that how the COVID is spreading, and even the people we are inside and everything, is still the COVID is happening. In fact, my plan is very clear.
First of all, the COVID is serious. We need to all wear the mask. We need to take our precautions. And especially the children, as well as the seniors, and seniors with a health condition, they need to stay home. There is no option on that part. But at the same time, the youth, they can go out with the social distancing measure and they can start the work. There is no reason for complete shutdown. What the governor is doing, there is no reason for that, because the COVID medicine, by the time it will come, it will be end of 2020. By the time it goes to everybody, it will be another 6 months, 3 to 6 months. And I can tell you, we cannot shut down the economy. Today, when I work with the Latino community, they are suffering, and many people are suffering. And I want to really thanks the President Trump. I can tell you, he's sending the load of food to all the families in the Latino community. Not many people know that, nor the media cover this thing, but this is the truth, because I delivered the food to the Latino families, and that is a 1 week of food. It goes to the family, and so what I mean to say is, we need to slowly start opening up. We need to focus more on businesses, because if this continues for another 3 months, many businesses will be gone forever. Today we can save some businesses, because some are already gone, which we cannot bring it back. But today we can save some businesses. We should slowly and gradually start opening up and take all the precautions. And at the same time, the youth, they should return to the work. People, those who can work from home. But those who need to be at the place, they need to take and all the social distancing measure and start getting to the track. My first of the goal is, as soon as the medicine is available, then healthcare workers and the people, those who need to be on the floor, and the customer facing job, they need to given first priority, and then the people, those who are working from home, as well as the seniors. Got it. Okay. There are a couple of more questions which I'll pick up, and I also want to be mindful of the time. It's almost 10 o'clock, so Hajji, we Hajji. can definitely continue for a couple of more minutes. One of the questions that's coming up is, when do you think will this happen? Which is, companies would start manufacturing stuff in India. Now, the example being quoted here is like Apple. When do you think companies like Apple can, uh, and whether you are in agreement or alignment with that the manufacturing hub should move to India? What's your take on that? So one thing I can tell you today, India has a great opportunity. What happened in China? Companies, they have realized that they cannot keep the manufacturing at the one place. At the same time, India has a great opportunity. But Varunji, I can tell you, my opponent, he has a sour relations with India. So things are not moving to the pace how it's supposed to move. We are in the Silicon Valley. We need to have the more close ties, because all companies have the software unit back in India. Yeah. And it is very easy to expand to the manufacturing part, and we can go in. So I will be working very closely with the US companies here, as well as the back in the country, and ensure that the it need to be a one-stop shop, because here the US, the way it works is, they don't need any corruption, bureaucracy, and all those things. This is where actually I want to create the more transparent system and ensure that once the company sign the agreement that they have to move, it need to be a flawless process and need to be a very quick process. And especially if you have to build for the multinational, we'll build that process for them. And also, like India is one of the superpower. I can tell you, they have all the talented people. They have enough land. They have everything what the companies need. It's just one slight push that if you're coming out from any other part of the world, then India is one of the best places to do the business. And we'll do this, yeah. Great. Again, like I said, this was again very, very informative. Somebody uh, who is right now 5 days away from the election results. I think sitting here and explaining the kind of direction he is going to lead us into is really appreciative. So thanks for doing that. But before I definitely let you go, a couple of more pointers, and I would rather let you kind of speak on those. What are the other things that you would love to share with all the people who are watching or listening to you that makes you a candidate, who should be elected? Tell us those kind of highlights
so that people who are listening and who have still not voted would vote for you? Thank you so much, Varunji, for giving me this opportunity, and thank you, Radio Mirchi. First thing is 22 years of my background of public service, and my complete motive is how to help our community, our people, our Indians, those who are suffering with the green card issue, homeless people in America, those who are suffering every day, and what Varunji has described earlier with the winter, and not only winter, the rain will also be coming soon. And also like my intention is to grow the Silicon Valley and take it to the next level. My intention is to teach our children the latest technologies like artificial intelligence, data computing, advanced medicine, robotics, right from the third year. My intention is not to allow any school to close, because today Cupertino is going to close 5 schools, and nobody's doing anything about it. And you know that for how many dollars? For just $5 million, which my opponent just spent it in the election for every year. I can tell you, time has come. If we don't stand up, then not only America, but entire world will suffer. Because today the United States is very innovative. Whatever we produce, it is used by the rest of the world. Today, I'm asking you, all of you, to stand up for our culture, our Hinduism as well, which is bashed by so many people. And we need to get united, and we need to raise, and we have to bring our voice back in the Washington. Today, we need to stand up for our American people because they have given us so many things. It is time to give them back and fight for America. Let's not make this country as a socialist state and another Venezuela, what my opponent is trying to do with the progressive socialist agenda. It's time we should work for America, work for American people, and work for the community right here. And I can promise you that 22 years when I work community service, that is my part-time job, and I did more there than my regular job. I can tell you, without any single pay. I can do a lot more when I'll be working 100% for the community. So give me one chance to work for you, because in 4 years the opponent has not done anything, but give me 2 years, and you can see the difference. Got it. All right, that's a good point that you brought up, and of course, something that everybody needs to know. What you stand for and why someone should vote. Now, a little bit, just to kind of wrap it up, on your personal front as well. Let's kind of know a little bit more about Ritesh Tandon, the not the congressional candidate, but the human being he is. You mentioned about, you've been part of Shankara, Upma, and you've done a little bit of a lot of kind of community work on through different podiums as well. I would love to know a little bit more about how, if you are selected and you are the next candidate, how do you plan to continue doing that side of the efforts as well then right now? So for first thing is I worked for Shankar 22 years. Then I worked for Upma for 7 years, converted Upma very similar to Shankara, I can say, where we started doing 10 daycare centers and everything. Right. Now, if I'm elected, I'll convert all the non-profit organizations in the Bay Area with the model of Upma and Shankara. I know that what the challenges the non-profit face. And in fact, I will become their voice, and I know how to remove the hurdles. And all the non-profit who is working for the humankind, working for the human being right here in the United States and back in any part of the world, I'll be standing for them and I'll help them. Because coming from the non-profit background, Varunji, I can tell you, people have not seen the other part of the world. Those people, they are there. I can say we are very lucky that we end up here and we are enjoying our American dream and American life. But those people, they can equally do it if they have given the chance, but they don't get the opportunity like this. And this is where actually we need to open up the opportunity for them, if not at least for their children. So they have one life like us. They should also live their good life, yeah, and enjoy this. Because many things I've seen that the people, because of all this politics and everything, at the end of the day, the people suffer. And we have to keep everything aside and work for the common people here as well as the other part of the world. Very, very well said. Uh,
That's great. So thank you once again, Ritesh ji. Even though I made I just pushed the URL so that people could also join, and I see someone join from UK. I know he is not going to be able to, vote for you, but I would love to see, what he has to say based on what you said, because I always love people come and talk about, the session about this, and I would love to know, what he could sense from your thing. So, namaste, Deepak ji. How are you? You are mute. Uh, yeah, sorry. First of all, namaste. And No. Tandon ji, you're doing a very good job. Namaste to you as well, to everybody who's watching this. The Thank you. point that I picked up of yours is about the COVID effect on everybody around the world, not only in US, not only in UK, overall. Overall. The point to be noted was let the affected elder people be at home and let the young people come up ahead, young generation. I've seen a lot of young kids, they are most of the time on the social media doing unnecessary things rather than Yes. putting their time into productiveness. A productiveness that is already affecting us by stopping that, production, any kind of production, maybe where the implementation of a human being is there and where we get the production out, where we get in terms of money exchange. You earn and you spend on your lifestyle. So you had that set pattern. Right. Now you don't have that set pattern since last 6 or 7 months. So people have been shaken, they have been disturbed, and they have been really mind-boggling what's going to happen because somebody must have just taken an insurance last year, and he won't be able to cope up this premium about it. So yes, coming to the bottom line is all the youngsters, the lockdown should be there for the people who will get affected or who can spread this or who can get affected very easily. That is right. Yeah. And So also, it's yeah, go ahead, go ahead. finish it. No, I was just telling that this should be spread not only in US but all over the world. Varunji, thank you so much for Sure. bringing this on the platform because I always say, okay, take the best practice from every person. So I took whatever I liked from you, sir, and all good wishes to you. If your Thank motive you. is right, you will win. Even if maybe the wrong motive may be powerful now, but over the period, this will be a learning experience for you. This will make you more stronger. And I just want to mention that part when you have brought up the young kids. So, इसमें like all the young kids, and especially my campaign team as well, we were helping the seniors. They want to buy the grocery. We used to buy the grocery for them and pick up the things because they are very much exposed if they go outside. So Yeah, also the same thing can be applied in the youth in the UK and other part of the world. Help the seniors what they need, and don't knock their doors. Just leave on the door and go away, and just text them that your stuff is on the door. So it's exactly. yeah. Right. I Right. completely agree with you. And as a single person, whatever a person can do, like I always see anybody around, and I always think, can I help you? Can I do this for you? Can I do that Yes. for you? But now becoming COVID, always send a message to people because you can't touch anybody or you can't just carry there because you Yes. need to disinfect yourself completely. But apart from that, I always text message, if somebody is not well, let the vicinity know. My mom always says, your first relatives, your neighbor. Exactly. So if you take humbly care of each other, no matter what it is, and I think so, things will improvise. All we need to do is keep an eye opener, like the youngster get pushed a little bit. And whatever your motives are really very good. And I would say, in your domain, within your vicinity, you know much better. So you are the better judge for that to implement rights and do the right thing in there. Thank you so So all much. I would say is no. I wasn't about to come because it's like almost 5 o'clock early in the morning, and I've been Oh, watching Varunji. So this is my time. Like I did not go to work. I was not well, but rather than seeing a movie, I watch Varunji's show or something else. क्या Which, बात है? Yeah. हाँ जी, यही होता है. And apart from that, not only Varunji, I also watch David Attenborough. Great. Everybody should Great. watch that.
whatever he's saying, he's a 93, 94-year-old gentleman. So he's seen a century in front of his eyes. So what it was 100 years before when he was born and what it is now that he's 94-year-old, he gives a lot of change. And this would change the whole world if we don't change ourselves. True. Because we are all utilizing from Mother Earth. So anyway, motive should be good. Outcome will always be good. Very well said. So Very good well luck said. to you. Yeah, good luck to you. Good luck to you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, I'm not much of a politician guy, but all I can do is put a little bit of Okay, disinfectant there, to, clean it up. to be to be frank, like none of the politicians need to be politician. They need to be Exactly. only public servant. I agree with you. All right. To this point, yes. So on that note, thank you, of course, Deepak ji. But Thank you, sir. Much obliged. Ritesh ji, once again, it has been an honor. Good to know you. Good to know, what you stand for, and I wish you all the very best. Hopefully, results. I think third night go right. When are the results coming out? Yeah, result will come out on third night. Got Yeah, it. and I just want to say on the same line, like what the COVID point it discussed, because this is what we are doing right now with a lot of Latino community. Like treat everyone equal. Don't worry about anything. Whatever way best you can do to help even one person also with whatever best way you can do it, that will be great. Because right now, this is a big disaster, and a lot of people, families, they are suffering. Even you can help even one family also with anything, whatever you can offer them, that will be great. And Varunji, thank you so much for inviting me in this show. It is a great pleasure meeting with you, and you're also Cisco guy, so I'm also Cisco, Yes. ex-Cisco. So it's a great pleasure meeting with you. Same And here. आपको भी दीपक जी आप रेस्ट कीजिए and wish you a great day. Wish you all the very best. I'll look forward to some great news on the third night, and wish you and everybody in in your team as well. I know I've seen a lot of hard work done on social media. All the young kids and everybody supporting you. So I Yes. think they definitely deserve some good news on third night. So all the Varunji, best. I can tell you I'm so blessed. I have such a great volunteer team and also organizations who are working, and I can tell you this election is something like forming the new family, I can Oh say. wow, that's great. All right, thank you so much again, Deepak ji. Take care, Ritesh ji. Sorry, Thank you. and I will talk to you very soon. Good night. Thank you. Right, Bye. bye. Good night. All right, thank you. All right, so that was Ritesh Tandon, all the way from Bay Area, हमारे यहाँ local ही, and he's the congressional candidate. He would be, he is definitely standing for this seat from District 17. But at the same time, the results are due in like less than a week ago, in less than a week. So अगर आप लोगों ने अभी तक vote नहीं किया, and if you guys are still kind of looking around and thinking, you should go to his website, and you should find more details around him. If you are still have any questions, he is a very approachable person. You can directly reach out to him, talk to him, and ask him hard-hitting questions if you want. But make your choice. But the most important question and the most important point out of all this is, please go out and vote. Exercise vote. That is so very important. If you want to challenge or question any of the candidates, you have all the rights if you have voted. If you have not voted, then you definitely don't even stand a chance to even ask the candidate, even the existing candidate or a future candidate, any kind of question, because you have not exercised your vote. So, like I said, please make sure the elections, you really, really, really exercise your vote. And like I said, you should all visit his website. His website, I think, is tandonforcongress.com. That's what his website is, and you will find all the information on his website. And like I said, you should definitely put across your questions, put across your ideas, thoughts, views, because I'm pretty sure, having heard him tonight on this show, एक चीज जो मुझे बड़ी clearly दिखी है, he will definitely be very open to get any kind of feedback, any kind of opinion, and he will not kind of judge you. Even if you are not in agreement or in alignment, I'm sure he'll be able to kind of convince you. So
Again, on that note, please go to tandonforcongress.com and make sure you look up all the information. And if you still have questions, if you need any kind of guidance, help, please reach out to him directly. I'm sure he himself or his team will be more than happy to help and address your concerns. So, of course, on that note, we are almost left with the last 45 minutes. And it's time I have the stream open. So if somebody wants to come and join and talk to me about anything else now, I am going to play some songs as well now for you guys. Last time when I did, a lot of people joined and they wanted to uh, listen to a lot of songs. I will start off with this, which is currently my favorite, and I listen to it every single day. So let me just start it all over again. Here we go. All right, guys. So anybody who wants to join in, please go ahead. All right, guys, you're listening to RJ Varun on Radio Mirchi 1310 AM. अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कॉल मी 408-934-1310 408-934-1310. Namaste, Pradeep ji, kya haal chal? Welcome. Okay, I see someone join in. Namaste, Dheeraj ji. Welcome back. Hey Varun, how are you? Very good. आप कैसे हैं? बस थोड़ा ठीक है, थोड़ा डिप्रेस है. थोड़ा डिप्रेस हैं, क्या हो गया? डिप्रेस बस अपनी इंडिया की न्यूज़ के लिए. Yep. आज वो देखा वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो न्यूज़ हुए थे. अच्छा, फिर उसके कहा कि हमें इंडिया में बहुत सक्सेसफुली किया था, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. और उसके बाद फिर जैसे रिया का इंटरव्यू लिया था वैसे ही सरदेसाई ने जाके उसका इंटरव्यू लिया. ओ रियली? अच्छा, ये मैंने मिस किया अभी, ये नहीं मुझे पता. अरे भाई, उन लोगों ने वही राजीव सरदेसाई ने उनका इंटरव्यू लिया और क्लेरिफाई कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ गलती नहीं किया था. नहीं वो तो निर्दोष हैं. ऐसा कुछ उनका नहीं था कि उन्होंने अटैक किया था. I don't know. इंडिया में अब इस टाइम I don't know यार. I don't know. Seriously, the media is so bad right now, man. I'm so tired. Seriously, ये तो this was अच्छा, पता नहीं ये लोगों को क्या एजेंडा है और इनको डर भी नहीं लगता. Seriously, आपने वो देखा था साध्वी प्रज्ञा का जो इंटरव्यू था रिपब्लिक पे? Yes. तो उनका जो एक मेन पॉइंट था, राइट, कि द पर्पस, राइट, कि उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ उसका पर्पस क्या था? पर्पस उनके हिसाब से बस ये था कि दे वांटेड टू प्रूव इन इंटरनेशनल स्टेज, इन द UN and FATPA, that Hindus in India are terrorists.
That was the purpose. Yeah. To say that India is a terrorist country at the international stage. What kind of people are living in India, man? I don't know. I know. I mean, you see, you do something, you do some corruption, you make some money. That's of course not okay, but it's still okay. But you are living in India and then you are working against India. Then what are you doing? It's like too bad. और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये हमने वो जो एक परसों शायद जो कन्वर्सेशन एक छोटी सी की थी ऑन वी स्टैंड फॉर जस्टिस प्लेटफॉर्म पे, वहां पर बेसिकली लव जिहाद को लेके बहुत उसके बाद टॉपिक बने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज, हम जैसों के लिए ये सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस हमारे लिए आ जाती हैं यहाँ पर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे, और इंडिया में कोई कुछ भी करे इस टाइम पे, स्पेशली ये जो सो वेल रेनाउंड जिन्हें कहते हैं जर्नलिस्ट, एग्जैक्टली, और इनको और कुछ भी कह ले, उनसे कोई सबूत नहीं पूछने वाला। exactly. अभी जब लव जिहाद पे क्या नाम है उसका हुआ था, तनिष्क वालों का, फिर सबने कहा कि बाइकआउट तनिष्क, फिर एनडीटीवी ने फेक न्यूज चला दिया कि गुजरात में किसी एक तनिष्क स्टोर पे पूरा तोड़फोड़ कर दिया हिंदुओं ने, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। बाद में फिर वहां पे लोग गए, उसको कॉल किए स्टोर को कि भाई तुम्हारे कुछ तोड़फोड़ हुआ क्या? बोला नहीं, कुछ तोड़फोड़ नहीं हुआ है। फिर वो स्टोर वाले एनडीटीवी को क्लियरफाई किए, फिर एनडीटीवी ने जाके क्लियरफाई, नहीं तोड़फोड़ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मतलब गुस्से वाली बातें हुई हैं। मतलब द होल पर्पस, राइट, होल पर्पस इज टू गिव द फेक न्यूज, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है, पूछने वाला नहीं है, राइट? एग्जैक्टली, प्रॉब्लम यही है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, मैं यहाँ यूएस में बैठा हूँ, यहाँ पर भी मैं आजकल ऑब्जर्व करता हूँ, यहाँ पर वो मीडिया हाउसेस हैं, दे आर फॉर एंड अगेंस्ट, राइट? आई मीन जो करंट गवर्नमेंट है उनके फॉर भी होते हैं, अगेंस्ट भी होते हैं, बट उनकी भी एक लिमिट होती है, एक लाइन ड्रॉ करी गई है जिसके आगे वो नहीं जाते। और बट इंडिया में आजकल आई थिंक अपनी कंट्री के बारे में कम से कम यहाँ के रिपोर्टर का ये है कि अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं, लीडर्स के बारे में बोल देंगे, इलेक्टेड ऑफिशियल्स के बारे में बोल देंगे, कम्युनिटी लीडर्स के बारे में बोल देंगे, यहाँ तक कि जो पावर में नहीं है उनके लिए भी बोल देंगे, बट कंट्री के अगेंस्ट कभी नहीं कोई ऐसी चीज हरकत करता है। और आज के इंटरव्यू में भी जब वो पाकिस्तानी मंत्री इंडिया के डिफेंस के बारे में इतना कुछ कह रहा था, तो राजदीप आराम से सुन रहा है उसको। अच्छा, he has no, I mean, what that guy is, man, what this New Zealand has been doing, right? I think मुझे एक चीज तो हालांकि आई एम नॉट इन अ कैपेसिटी, बट कई बार ऐसे लगने लग जाता है कि हम जैसे कुछ लोगों को ना जाके करना चाहिए, बट अगेन the bigger problem would be करना नहीं चाहिए। The thing is we need to start exposing them. I mean, there are already few people I have seen on Twitter, they take their chat, they take all chats, they take the proof, then they show this is the fake, but I think this community of the people who are doing it is very small. See, because they're not paid, right? See, if you are paid, then you have some purpose, right? But on their own interest, there'll be only a few number of people who will be doing it, because everybody else is busy with their job, their life. Exactly. But I think because इतना रिस्की है वहां पर, कुछ भी ऐसा भी करना is not खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आजकल देख लो जैसे SSR केस से रिलेटेड ही देख के अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो आजकल उसको वैसे ही धर लिया जाता है। तो that's another thing which scares everybody। और अब तो इनका शिकंजा जिसे कहते हैं ना इंटरनेशनल तक, लाइक हम जैसे लोगों को भी यहाँ पर के हम भी क्यों आवाज उठा रहे हैं कुछ चीजों के लिए, वो नहीं उठाने देना चाहते, हमारे को भी वो रोकना चाहते हैं। Exactly. This is really bad। और ऐसा नहीं, अभी पता है, मैं सोच रहा था कि आई थिंक हम लोग को एक ऐसा कुछ बनाना चाहिए, मे बी एक ट्विटर पोस्ट बनाऊं, उसमें क्या है कि जैसे अभी आपका प्लेटफॉर्म है, या फिर कभी टाइगर आ जाता है ऑनलाइन, या कोई आ जाता है, तो फिर हम एक लाइव सेशन कर लेते हैं, तो ये हम लोग को ना डायल्यूट कर देना चाहिए। डायल्यूट मतलब मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं रख के, create like thousands of platforms। Yep.
and then create one page where whichever platform is going to be used that day, we give a link, and then everybody goes live there and talk about whatever they think, whatever proof they have, or if they find something, they want to express something. So that Right. way, instead of having one or two platforms where people can target, we can have thousands of platforms. Right. So there will be no specific people to target for them. And we Right. still will be multiplying, and we still will be talking about everything. Correct. No, I think that's a I think a good idea as well. But इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, right, कि जैसे हमने ये प्लेटफॉर्म किया, right, इसके अंदर there are haters, there are supporters, right, वो and तो हर हर जगह जगह रहेंगे, पर वो जाके बहुत ही अजीब तरह की आजकल बातें करते हैं। ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया पे, और उसमें और इसमें नहीं, इसमें केवल हेटर्स सपोर्टर्स नहीं, इसमें फिर वो क्या बोलते हैं, पेड पीआरस भी होंगे, वो उनको आप पहचान भी नहीं पाएंगे, और वो आपके बीच में ना कोई एक मुद्दा लेके उसको छोटी सी चिंगारी को इतना बड़ा आग कर देंगे यस कि आपको आप उसके बाद ना संभाल ही नहीं पाओगे। आप कितना भी संभालने की कोशिश करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कैसे संभालूं, इसको बिल्कुल। रोकूं तो कैसे रोकूं। बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे ना ट्विटर पे, और कई चीजें हैं जिनको मैं इग्नोर करता हूँ। जैसे अभी भी जैसे सुचित्रा जी लिख रहे हैं कि प्लीज डोंट इंडल्ज इन एनी मड स्लिंगिंग एक्टिविटी लाइक अदर एसएसआर लीडर्स ऑन ट्विटर, प्लीज कंटिन्यू एज यू आर डूइंग। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करता कोशिश हूँ कर वो एग्जैक्टली, मैं भी मतलब कल टाइगर भी वही बोल रहा था, और मैं भी हमेशा ही बोलता हूँ कि छोड़ो यार, मतलब मेन मुद्दा अपना कुछ और है। एग्जैक्टली आई थिंक मेन यही मुद्दा प्रॉब्लम है। लेकिन जब ये चीज आती है ना, तो फिर उसके बाद फिर मतलब ऐसा लगता है कि कैसे जवाब नहीं दे, और उसको कैसे उसको अच्छा कह दें। अगर या तो इग्नोर ही कर दें, और इग्नोर करना भी मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। राइट। नहीं, वही बेसिकली समझ नहीं आता कि लोगों को मिल क्या रहा है, राइट। आई मीन एग्जैक्टली, आप लोग ये समझें कि हम लोग यहाँ क्यों आए थे, क्या रीजन था हमारा आने का, और अब अगर हम आए हैं, कर रहे हैं, तो लोगों को फालतू के टॉपिक्स में घुसा के किस लिए इन्वॉल्व किया जाए, क्यों एक दूसरे की, और जैसे कि आपने जैसे टाइगर का नाम लिया, राइट, देयर इज नो पॉइंट इन ब्रिंगिंग फैमिलीज और लोग रिश्तेदार। अरे यार, हम लोग यहाँ पर बात करने आए थे जस्टिस के लिए, आई टेल यू। मतलब एग्जैक्टली कोई हाँ, हम लोग सभी जस्टिस की मांग कर रहे हैं ना, तो उनको इतना थ्रेटन क्यों करना है यार। अगर इफ यू डोंट एग्री टू समथिंग कि हाँ इसने उसका नाम क्यों ले लिया, उसने उसका नाम क्यों लिया, तो हाँ ठीक है, बोलो ना तुम। इफ यू आर थ्रेटनिंग, यू आर बेसिकली आस्किंग एवरीबॉडी टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। करेक्ट। आप जो अपना जो वो मुद्दा है वो छोटा करते जा रहे हो, सर्किल बड़ा करने की जगह आप छोटा करते जा रहे हो, लोगों को डराते जा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग को ना मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ताकि डराने के लिए लोग इतने सारे लोग हों कि कितनों को डराओगे। सही बात, ये अब अच्छा आइडिया है। आई थिंक आई वुड इनकरेज, लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि यही हो रहा है। ऐसे लोगों को चुप करा दिया गया है। कल जैसे वो रमन जी ने एक पोएम सुनाई थी, राइट, उसके अंदर बोला कि कितने प्लेटफॉर्म, कितने सारे लोग बंद हो चुके हैं इसी डर की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, राइट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली, मेरा खुद का, मुझे भी ऐसा लगता है कई बार कि यार ये वर्थ इट नहीं है, बहुत सारा रिस्क, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, बट एट द सेम टाइम अभी भी एग्जैक्टली कंटिन्यू बहुत करना। जरूरी है, बहुत जरूरी है ये करना। अभी अभी सुशांत के लिए न्याय के बीच में राइट इंडिया की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। राइट एक तो लोगों का न्याय से जो भरोसा उठ गया है वो भी इट विल कम बैक, और लोग जो जुड़ना छोड़ दिए थे, जुड़ के आवाज उठाना छोड़ दिए थे, वो इस बार जुड़ के आवाज उठा रहे हो। और इस बार अगर न्याय नहीं मिला तो फिर जुड़ के आवाज उठाने का फिर से उतनी हिम्मत नहीं आएगी। राइट तो इस बार तो मतलब इस लड़ाई को छोड़ना ही नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। मतलब मैंने कई बार कहा है कि इस लड़ाई में न्याय नहीं मिलना इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल, इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। वी कंटिन्यू करते रहना है until मेरी we get बहुत the लोगों से justice. बात होती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे लोग हैं, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, ऑब्वियसली मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट शी नोज हु शी इज। वो कॉल पे मेरे से बात करते करते आई थिंक शी क्राइड कपल ऑफ टाइम्स, और उनका ये सुशांत की डेथ ने बहुत लोगों को लिटरली, जिसे कहते हैं ना, पहली बार मैंने ऐसा देखा है। एक होता है अपने फैमिली में कई बार होता है कि कुछ लोगों की डेथ होती है तो वो तोड़ देता है। सुशांत आउटसाइडर होके भी उसने कई लोगों को ऐसा तोड़ दिया है कि पीपल आर रियली स्पीचलेस, उनसे काम नहीं हो रहा, उनसे फोकस नहीं हो रहा, उनसे
मेरी भी हालत, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं बता रहा हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैं इतना परेशान हूँ कि कैसे इसको मार दिया। ऐसा लगता था जैसे किसी मेरे दोस्त को मार दिया, और मतलब इतना अच्छा इंसान, इसको कैसे मारा, वो भी इतनी बुरी तरह से मारा। मतलब कौन लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं अब तो मतलब उनको तो मतलब सजा मिलनी चाहिए। राइट। और उनसे बात करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पे कितना हम फालतू का बवाल बना के बैठ जाते हैं, फोकस लूज कर रहे हैं हम एक्चुअल प्रॉब्लम से फोकस। और ये जो जो ऑन द अदर साइड है, वो यही चाहते हैं कि ये लोग किसी भी एक तो वो भी, हाँ एग्जैक्टली, जिससे हम लड़ रहे हैं वो भी ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, वो भी हम पे अटैक कर रहे हैं, और जो SSRN है वो भी अटैक कर रहे हैं, तो मतलब क्या फायदा हुआ? Exactly. At least SSRN को come together and then explode and increase in the number, support each other. इसीलिए मुझे उनका काम अच्छा, जैसे रवि तिवारी है, मुझे उनका काम अच्छा लगता है। उनके वर्ड से जो हमारी फाइट, मैंने कभी उनके वर्ड से ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो अपना हैशटैग चलाते हैं, इतने सपोर्टर्स हैं, इतना वो लोगों को जोड़ते हैं, रास्ते पे आते हैं, अपना जो भी करते हैं, उनका काम मुझे बहुत सही लगता है। वो अपना बहुत सही काम कर रहे हैं अपने काम से। तो हम एक तो हम लोग को भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग को भी ये लाइव सेशन वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट। अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि एक ट्विटर साइट बना सकते हैं जहाँ पे सबका अपना प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसको अपने प्लेटफॉर्म पे आज करना है वो डाल देंगे, और देन एवरीबॉडी जस्ट जॉइन दैट। एब्सोल्युटली। अभी हमारे साथ और रेगुलर हैं, और जिनके लिए बहुत डिमांड करते हैं सब लोग आजकल, रमन जी भी आ चुके हैं। तो आज आपकी डिमांड दीपक जी ने की है, जो कि इस टाइम पे इनका कैमरा बंद हो गया बाय चांस। दीपक जी ने मेरे से यही क्वेश्चन पूछा लाइव पे कि रमन जी कहाँ हैं। तो जी सर, नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया सर। तो ये इस टाइम पे हम लोग हैं मेरे रेडियो शो पे। आपको सिर्फ आप जो वर्ल्ड में तो सुनते ही सुनते हैं, आज स्पेसिफिकली आप रेडियो से यहाँ 1310 पे भी लाइव जा रहे हो बे एरिया में एंड कनाडा। क्या बात है सर। You're gonna become a local celebrity as well, रमन जी। आपने आज कुछ लिखा है? जी, लिखता तो हूँ ही मैं रेगुलर। जब मैं शाम को ऑफिस से घर जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जो उस दिन का कोई मुद्दा हो उस पे लिखा जाए। तो चलता है, थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ। और दूसरा, आपने भी मुझे एक बार, मैं अभी ऑफिस पहुंचा ही हूँ, मुझे लैपटॉप में निकालना पड़ेगा। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। नो वरीज। मैं एक बार दीपक जी से भी बात करना चाहूंगा। ऑब्वियसली दीपक जी, आप इस टाइम पे आपने कुछ मेंशन किया था, यू आर नॉट वेल, राइट? क्या हो गया? या ये थोड़ा देखिए, toothache, bad toothache. Okay. I've taken a remedy और बोलिए। आजकल कोई बीमार होने की बात करता है ना, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, और उससे बहुत ही डर लगता है कि किसी को बस कोविड का ना हो। कोरोना नहीं हो। नहीं, कोरोना तो नहीं है, टचवुड। इतना अपना ख्याल रखते हैं। क्या होता है कि कभी कभी अकेले रहने से ना आदमी इतना सटीक हो जाता है, यही फर्स्ट टेक केयर। क्योंकि और अगेन वही है, बड़ों की कहावत है कि कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। बिल्कुल सही बात। If you're all right, you will be able to pass on something what you have. So I need to be intact. I need to be, Sure. और मैं एक दो कमेंट्स, 1 मिनट में एक दो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनको जरूर एड्रेस करना चाहूंगा। तो संदीप ठाकुर, डेफिनेटली ये एक टॉपिक है। आई थिंक या तो मैं नेक्स्ट थर्सडे को अपने रेडियो शो पे लोगों को लाऊंगा। आई विल मेक श्योर पीपल हु कैन स्पीक विद मोर नॉलेज अराउंड दैट। ऐसे नहीं कि रैंडम कोई भी आके कुछ भी बोले। We really don't want to instigate people. We really don't want people to get offended by certain things. So वो लोग जो इसके बारे में बड़ा एस्थेटिकली बात कर सकते हैं, I would love to encourage। and धीरज जी, दीपक जी, अगर आप में से कोई भी इस बारे में थोड़ा इवैल्यूएशन करना चाहता है, थोड़ा पढ़ना चाहे, ऑलरेडी अगर आपको पता है, I would love to have you guys, part of that panel as well. Let's talk about this love jihad topic. एक ये नया एंगल, जो नया तो नहीं कहूंगा, बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ, अवॉइड, इग्नोर लोग करते हैं इसके बारे में करना।
but let's do it on the radio show, and let's make sure कि यहाँ पर भी लोगों को पता चले. And the other thing which I really want to touch upon is, I am really happy the way things are going around Bollywood. वो बहुत डर चुके हैं, and जो उन्होंने सुशांत के साथ किया, ये कुछ भी नहीं है उसके आगे. ये तो अभी शुरुआत है. I think मैं देख रहा था वो जो लक्ष्मी बॉम्ब का नाम चेंज हो गया, मूवी बॉम्ब हटा दिया, और फिर भी क्या फर्क पड़ता है, फिर भी बॉयकॉट तो करना है, फिर भी देखने वाले. हाँ, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, बट डर दिख रहा है, अब एविडेंट दिख रहा है. क्योंकि उसमें भी लव जिहाद का थोड़ा सा उन्होंने अच्छा दिखाने की कोशिश करी है. वो कॉपी है एक मूवी की. वो मूवी जो है एक साउथ इंडियन मूवी कॉपी है. उसमें हीरो हीरोइन दोनों हिंदू हैं. इसमें हीरो को मुसलमान बनाया है और हिंदू उसमें बनाया है. अच्छा, तो इसके लिए भी लोगों ने कहा था कि ये मतलब क्या क्या जरूरी है, मतलब क्यों, क्या पर्पस क्या है. कि एक तो नाम ऐसा रखा है और कहानी में तुम ये दिखा रहे हो, तो तुम मतलब क्या, मतलब कुछ पर्पस है या यूं ही है. तो उसके लिए भी कुछ बातें चल रही थी ट्विटर पे. नहीं, आई थिंक, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, किसी ने एक वो फोटोग्राफ भेजी थी व्हाट्सएप पे मुझे, जिसके अंदर ये शायद इस मूवी को प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा शो पे गए, एंड हमारे खिलाड़ी कुमार नासा से रिलेटेड कुछ कपड़े पहन के आए, एज इफ ही वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट. तो वो भी एक मैं सुनने को थोड़ा आ रहा था. आई डोंट वांट टू पास एनी जजमेंट्स राइट नाउ, बट उन्होंने बेसिकली कुछ तो ऐसा ट्रैक सूट सा या समथिंग कुछ तो उन्होंने पहना हुआ है, जिसके ऊपर वो नासा का लोगो को फज करके कुछ और बना के, आई मीन, उसको नासा की प्लेन, उसको नासा की एक रॉकेट में बिठा के चांद पे भेज दो भाई. सही बात है, ऐसा ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि टेकिंग ऐसे इनडायरेक्ट मैसेजेस करने की जगह, राइट, एक हाथ जोड़ के तुम आए थे और तुमने थोड़ा बात की थी, you should have followed up on that. You should have done something. Done something क्या मतलब, उसकी भाषा ही देखे ना. कुछ वीडियोस आए थे, राइट, कुछ वीडियोस आए थे, इंटरव्यूज आए थे, जिसमें उसने खुलेआम कहा था कि जितना प्यार मुझे मतलब पाकिस्तान से मिलता है, उसके अपने वर्ड्स में इंटरव्यूज में, जितनी मेरी मूवी जितना पैसा पाकिस्तान बनाती है कहीं नहीं मिलता है. फिर उसने 2012 में खुलेआम लोगों को समझाया था कि वैष्णो देवी क्यों जाते हो, इतने पैसे खर्चे करते हो, तुम गरीबों में बांट दो. राइट, इतने पैसे खर्च होते हैं, गरीबों में दे दो, उसी में माता के दर्शन हो जाएंगे. मंदिर मतलब मंदिर की क्या जरूरत है तुमको, बाहर मन में ही मंदिर करके. मैंने डाला था अभी, और मुझे नहीं पता कि इतना ज्यादा वो होगा, क्योंकि गुस्सा मुझे भी चढ़ा था देख के. हालांकि नहीं, 2012 में उसने दो कम से कम इसको 2 इंटरव्यू देखे मैंने, ऐसे 2 अलग अलग जगह सेम चीज उसने 2 इंटरव्यूज में कहा है. और 2013 में वो अजमेर शरीफ गए हैं दरगाह पे दर्शन करने के लिए, उसमें उसके पैसे खर्च नहीं हुआ. और मूवी में भी तुम्हारे पैसे लगते हैं, तो आई थिंक उसकी बात हमें मान लेनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन मूवी, किसी गरीबों को दे दो तो अच्छा होगा. बिल्कुल सही मान नहीं लेनी चाहिए. हमने तो सोच लिया, हम तो अमल कर रहे हैं उस पे अभी तो. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अभी तो बिल्कुल नहीं कर देना. मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं अपने मम्मी डैडी को कुछ लेके दूंगा उस पैसे. बेटर. So it's very expensive to watch a movie in UK. It's really expensive, I'm telling you. Yeah. And if I have to go personally to the theater and to tell people boycott Bollywood, I would do it. Yep. मैंने intention बना लिया. I will do it. नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसे बातें चल रही थी कि मोनेटाइजेशन हो रहा है यूट्यूब वीडियो में, मोनेटाइजेशन हो रहे हैं, तो मोनेटाइजेशन ठीक है यार, लोग फेक न्यूज बना के मोनेटाइज कर रहे हैं. आप तो एक अच्छी न्यूज बना रहे हो, तो उसमें मोनेटाइजेशन किसी को हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है. ये तो मैं तो कह रहा था, मतलब हजारों चैनल्स होने चाहिए. लोग जहाँ भी देखे ना, नहीं, लोग जहाँ देखे ना, उनको सुख शांति दिखना चाहिए. Their bread is being divided now. तो इनका जो निवाला छिप चुका है और कोई और थोड़ा थोड़ा ले लेके थाली में बटोर रहा है, तो इनको लग रहा है भाई. और जैसा कोई तो वही तो ये गलत बात है, राइट. वी शुड इंक्रीज, राइट. हमें बात बढ़ानी है कि सिमटना है. It should explode, and I think we should ignore, and then everybody should start making more and more YouTube videos. कि लोग जहां भी जाए ना, उनको सुशांति दिखे. क्योंकि
क्योंकि ये एक रिपब्लिक चैनल है जो सुशांत का थोड़ा बहुत कवर कर रहा है, बाकी सब तो भूल दिए हैं, बाकी सब तो भुला दिए पूरा सबको। आप यू नो हम लोग सिर्फ सुशांत ही नहीं, हम लोग बाकी भी जैसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, राइट। इसी में एक और ऐसा केस है जिया खान का। जिया खान की मदर से जब मेरी बात हुई थी, और अभी भी जैसे होती है, एक चीज वो बड़ी क्लियर बोलती हैं, और हमेशा वो मुझे लगता है कि हाँ ये सच है। वो कहती हैं अगर जिया खान के कल्प्रिट्स को पकड़ लोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली सुशांत के कल्प्रिट्स को भी पकड़ लोगे, क्योंकि ये वही सेम लोग हैं, वही सेम इन्होंने हरकतें करी हैं, और ये आगे भी करते रहेंगे अगर इनको अभी भी नहीं पकड़ा गया। और उनकी ये एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह कह लो कि अनफॉर्चुनेटली सुशांत हैड टू लूज हिज लाइफ, बट सुशांत के बेसिस पे जिया खान का जो केस जो ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा था, आई थिंक उसको भी एक छोटी सी वो कहते हैं ना एक रोशनी, एक लौ खुल गई है। मेरा यही मानना है कि आप सुशांत के लिए मांगे, और सुशांत को जिससे न्याय मिल गया, समझ लीजिए जिया खान को भी न्याय मिल गया। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं गाइस, आप इस टाइम पे मुझे मेरे रेडियो शो पे सुन रहे हैं, विच इज द वरुण कपूर शो, जो हर थर्सडे को रात को 9 से 11 आता है यहाँ बे एरिया में, बे एरिया एज इन सैन फ्रांसिस्को। और वहां से मैं अभी 20 मिनट और है मेरे पास, सो वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू। और आवर में हमने बहुत और चीजें बात करी, जो मेरी कम्युनिटी के लिए हमारा एक एफर्ट होता है थ्रू दिस रेडियो स्टेशन, उसके लिए हमने एक कम्युनिटी लीडर को लेके आए थे, एंड देन वी आल्सो गॉट लीव टू कॉलेज करके एक पोर्टल है, वो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो आई विल कंटिन्यू टू डू दैट एज वेल एज इसके साथ साथ ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत हो गए, जिया खान हो गए, श्रीदेवी का केस हो गया, अजिताभ का केस हो गया, लुबीना का हो गया, एनी एंड एवरीबडी जिनके साथ इनजस्टिसेस हो चुकी हैं, हुई हैं, होंगी, हो रही है, हम इस को अपने शो के थ्रू भी बात करेंगे, एंड एट द सेम टाइम विल टॉक इट थ्रू द प्लेटफॉर्म एज वेल। सो रमन जी, यू आर बैक। हाँ जी सर, सॉरी जी। अभी एक तो आज ऑफिस टाइमिंग है, तो थोड़े से काम होते हैं सुबह सुबह, तो चेक देने, लेना वेना और पेमेंट ट्रांसफर, तो उस वजह से थोड़ा सा हेक्टिक होता है शेड्यूल। जी। तो दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, ये जैसे कि ये यूएस में शो चल रहा है, कनाडा में, यूएस में सुना जाता होगा, मुझे जहां तक मुझे आइडिया है। हाँ जी। और तो मुद्दे तो हर जगह पे एक ही हैं, सब जगह पे सुशांत है, और वो सब मुद्दे हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, राइट। मुझे लगता है कि अभी दीपक जी नमस्कार आपको। मैं उस टाइम नमस्कार करना भूल गया था जी। अरे क्या बात आप अभी कुछ कह रहे थे, अकेलापन कुछ जी। दीपक जी अभी जैसे मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि अकेलापन कुछ होता है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है, ऐसा कुछ। फिर मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो बात नहीं हो पाई पूरी तरह से। नहीं, सटीक बना देता है आदमी को, सटीक बना देता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही है कि मैं लिखता हूं, तो आज आप मुझे बताएं कि किस पे सुनना चाहेंगे, कुछ इस तरीके से कि कुछ सुशांत पे सुनना चाहेंगे। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारे लोग डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, उटपटांग चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड ही नहीं है, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो जिया खान हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड, राइट। आई मीन उन टॉपिक से हटके, उनकी इनजस्टिसेस के बारे में बात ना करके, हम एक दूसरे पे पर्सनल पॉट शॉट्स ले रहे हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। लोगों ने मुझे भी ऑब्वियसली कभी इन्वॉल्व किया, और मैंने तभी कुछ दिन पहले सब लोगों को रिक्वेस्ट भी किया, यार आपने करना है तो करो, प्लीज कंटिन्यू टू डू इट, मुझे टैग मत करो। मैं नहीं देखूंगा। ऑब्वियसली अब तो ऐसा भी हो गया, कई बार टैग कर देते हैं तो आ जाता है, तो कई बार देख लेते हैं, फिर खुद को बुरा लगता है, और जबकि मैं वो देखना भी नहीं चाहता। तो आप बिना मुझे टैग किए मेरा नाम डालें, नो वरीज अबाउट दैट। मैं सबको ये बोलता हूँ, आप नाम डाल दो, टैग मत करो, कि टैग करने से यस वो मेरी कई बार विजिबिलिटी में आ जाता है, और इतने सारे देख के बुरा हमें लगता है कि हम यार करने क्या आए थे और हम कर क्या रहे हैं। तो एनीथिंग यू कैन शेयर, कुछ आपने ऐसा लिखा हो जिससे लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करें, थोड़ा एनर्जी पॉजिटिव लाएं, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग टू डू फॉर टुनाइट। ऑब्वियसली वीकेंड पे भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है, वीकेंड भी आ रहा है ऑलमोस्ट देयर, बट आज आई एम एक और चीज मैं आप सबके साथ यहाँ पर, और थ्रू इसके मैं और लोगों को भी प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करता हूँ। हालांकि ये
लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, ये हर जगह नहीं जा रहा, इसलिए फिर भी कि जहां पर भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको एक मूवमेंट से जुड़ना है या आपको सुशांत के लिए फाइट करना है, या आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी फाइट्स करते हैं यार, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ऑफिस के लिए। आई थिंक पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड, अभी दीपक जी ने एक तरह सी बात की कि तबीयत खराब, दिमाग सीधा वहीं टेंशन जाता है, यार कोविड ना हो गया हो, सबको टेंशन आती है, लोगों की लाइफ में बहुत सबसे पहले ऑफिस में आते ही मैं अपने सारे एम्प्लॉइज का, अपने मैनेजर साहब से पूछता हूँ कि कोई बीमार तो नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूँ, वो बीमार हो। दूसरा, बीमारी के बाद सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टाइम पे चल रही है, और मैं यूएस के लिए ज्यादा बोलूंगा, इज जो लोग फायर होते जा रहे हैं, जॉब्स कटती जा रही हैं, पीपल आर लूजिंग जॉब्स डे इन डे आउट। मतलब एक वीकेंड से अगले मंडे तक पहुंचने में समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो इतनी सारी टेंशन उन चीजों से रिलेटेड है। उसके बाद इकोनॉमी का जो हाल है, उसका इम्पैक्ट हमें भी पड़ेगा, राइट। कई ऐसी कंपनीज हैं, यहाँ यूएस की अगेन मैं कुछ बात करूंगा, उन्होंने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स या डेज कम करने का प्लान शुरू कर दिया, विच विल ट्रांसलेट इनटू रिडक्शन ऑफ सैलरी फॉर पीपल, राइट। आई मीन, उसके बाद हम जैसे जिनके बच्चे हैं छोटे, उनको घर में बैठ के नौकरी भी करनी है, उसके बाद हमें उन बच्चों का वो इतना काम भी देखना है, जैसे मैं एक मजाक में बात करता हूँ, बच्चों को होमवर्क नहीं मिलता यार, पेरेंट्स को होमवर्क मिलता है, हमें होमवर्क पे प्रेशर लगता है। उसके बाद उसके बाद भी अगर एनर्जी बच जाए, तो ऐसी मूवमेंट्स में आके हम लोग अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल रहे हैं यार। इतना कुछ करने के बावजूद अगर लोग फिर भी फालतू की बातों में इन्वॉल्व करी जाएं, आई थिंक वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग है, और बड़ी क्लियर मैं एक चीज बोलता हूँ, आप लोग खूब हेल्प कर रहे हो और शांत बनाने में मत करो। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, लर्न फ्रॉम दैट हैपेंड टू दैट पुअर गाय, डोंट डू इट, डोंट रिपीट इट। बट आई थिंक अगर आप कुछ मोटिवेट कर पाए, नथिंग लाइक दैट। जी जरूर। देखिए, एक कविता मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिनेरियो पे है, जिंदगी की जो आपाधापी है, जिंदगी की तो भागम भाग है, उस पे है। मिलना जुलना, बात करना, आना जाना, ये सब चीजें करेंगे तो काफी चीजें पॉजिटिव होंगी। सिर्फ और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं, अकेले बैठ करके बोल रहे हैं हम लोग, एक दूसरे से मिलना भी जरूरी है। तो एक पोएम आप सबके लिए, टू ब्रिंग अ लिटिल बिट पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, दैट इज, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, मुस्कुराया करो। चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, मुस्कुराया करो। रिश्ते गर्माहट से भर जाएंगे, आया जाया करो। प्यार पाना है तो प्यार देना सीखो, प्यार पाना है तो प्यार देना सीखो। साथ चाहिए सबका तो साथ निभाया करो। जिंदगी के सफर में सामान थोड़ा ही अच्छा, जिंदगी के सफर में सामान थोड़ा ही अच्छा, किसी और का बोझ भी उठाया करो। चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, मुस्कुराया करो। दुनिया को जानो पहचानो, अच्छी बात है। दुनिया को जानो पहचानो, अच्छी बात है। कभी कभी खुद से भी बतियाया करो, कभी कभी खुद से भी बतियाया करो। किस दौड़ में चले हो, किससे आगे निकलना है। किस दौड़ में चले हो, किससे आगे निकलना है। कोई अपना पीछे रह जाए तो थम जाया करो। हसरतें बदल जाती हैं, रहती नहीं सदा एक सी। हसरतें बदल जाती हैं, रहती नहीं सदा एक सी। जो मिला तेरी रहमत है, शुक्र मनाया करो, शुक्र मनाया करो। क्या बात है, थैंक यू। वेरी ट्रू, वेरी ऑनेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। शुक्र मनाया करो। चलिए तालियां। आपकी आवाज मेरे पास आ नहीं रही है, मुझे लगता है मुझे दोबारा से लॉग इन करना होगा, ज्वाइन करना होगा। वेट फॉर अ मोमेंट, मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, आई नो, नहीं, आई थिंक दिस इज वेरी वेल, आई थिंक रमन जी की ये भी एक स्पेशलिटी है, बहुत ही टचिंग वाली है, बिल्कुल सीधा दिल पे लगती है कई बातें, और कई बार वेरी ऑनेस्टली ही पुट्स अक्रॉस अ पॉइंट। जो उनकी स्टार्टिंग लाइन ही अच्छी थी उनकी, मुस्कुराया करो, चेहरा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। दीपक जी ने मुझे, आज कितने दिन हो गए, आज 5वां दिन है शायद, नहीं 4था दिन है, जब आपने 4-5 दिन पहले मुझे बोला था, तब से मैं मुस्कुरा ही रहा हूँ। हालांकि वो बहुत तो है, सारी देखो
क्या होता है मालूम है, स्माइल एक ऐसी चीज है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बिकॉज पीपल पुट यू डाउन सो मच. कभी कभी आप सोचते हो कि मैंने क्या किया है. यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर. आई ऑलवेज डू अ मिरर प्रैक्टिस. Always go and look at myself in the mirror. Have I done anything wrong? Have I done anything? Then I analyze कि जो बोला उसका इसने अलग मतलब क्यों लिया. कभी कभी कोई लोगों को ना डायसेक्ट करके बताना बहुत जरूरी होता है, पोस्टमार्टम करके बताना पड़ता है. समझते नहीं, ये इंसान है, इसका माथा इधर होता है, घुटना नीचे होता है, ये कंधा होता है, ये नाक होता है, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि ये आंख खुली रख के भी सूरदास है. और इंसान जब तक अपने आप को नहीं पहचानेगा, वो दूसरे को कैसे पहचानेगा. आई नो. ये That's why आपने in lot of carry on. Sorry. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली. एक्चुअली मैंने आज एक ट्विटर पे भी डाला था. ये ना सुशांत ने एक स्टेटमेंट बोली थी. And I never realized actually, as a matter of fact, just like you guys, right? I mean, आप लोग भी जैसे कई बार बता चुके हैं, सुशांत के लिए बाद में ज्यादा चीजें हम सबको पता चलनी शुरू की, राइट? मुझे नहीं पता था ये this godly person, ऐसी ऐसी बातें बोल के चला गया, जो अब हम रियलाइज करते हैं कि हमने जब ये था तब हमने इसको सोचा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं इसको देखा. एक इसका कोट मैंने डाला अभी आज. ये कह रहा, everybody is in a hurry to decode you in a certain way, and then they expect you to adhere to their definition. How can they possibly do when you yourself are finding it hard to discover yourself? मतलब look at the meaning के और ये 34 साल का लड़का है, पटना से आया, और इसकी बातें देखो. ये क्या कर दिया इन लोगों ने, क्या मतलब feel so sorry, ये बॉलीवुड और जो इनका जो मीडिया है ना, इस तरह से कनेक्टेड है कि लोगों को मूवी के थ्रू और मीडिया के थ्रू केवल वही दिखता है जो ये लोग दिखाना चाहते हैं. जैसे अभी देखिए, सुशांत का इतना बड़ा केस है, लेकिन मीडिया में जाइएगा तो रिपब्लिक के अलावा बाकी सब ने बंद कर रखा है. और एक और कॉन्सेप्ट मुझे बाद में पता चला, और अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तो मुझे ना अब उससे मैं रिलेट कर पाता हूँ. ये सुशांत के टाइम पे बड़ा टॉपिक चला था जी, ब्लाइंड आर्टिकल्स क्या होते हैं. ब्लाइंड आर्टिकल्स होते थे, सुशांत के अगेंस्ट होते थे, बिना नाम. और आज की डेट में ट्विटर पे मैं यही देख रहा हूँ, फालतू के कोई आईडीज बने हुए हैं जिनका कोई ना सिर ना पैर, बट वो पॉट शॉट सीधा ले रहे हैं, सीधा, और पता लग रहा है कि किसके बारे में, कभी मेरा है, कभी किसी, मतलब किसी के बारे में कुछ भी लिखने की पूरी ब्लाइंड, वो जिसे कहते हैं ना, वो चल रहे हैं. तो लोग कैसे डिमोटिवेट हो सकते हैं. आई राइट नाउ बिलीव कि सुशांत कितना, और नोइंग व्हाटएवर आई हैव नोन हिम इन द लास्ट 3 months, कि वो कितना ज्यादा सेंसिटिव बच्चा था. और अगर वो ऐसी चीजें देखता रहा होगा कंटिन्यूअसली, जैसे वो मी टू मूवमेंट तक में उसको घुसा दिया गया बिना मतलब के, तो सोचो उसका हालत क्या हो रही होगी. He was a misfit. Yes, he was a misfit. I'll be very loud and clear. वो बना ही नहीं था इस गंदी इंडस्ट्री के लिए. वो बना था, उसको अपनी इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी. नासा में आज की डेट में बैठा हुआ, यहीं होता, मेरे बे एरिया में कहीं होता मेरे ख्याल से, या फ्लोरिडा में होता, और रॉकेट बना रहा होता, मून या प्लैनेट्स की बातें कर रहा होता. आई थिंक दैट वाज व्हाट ही वाज काइंड ऑफ शुड हैव हैपेंड. But he was a super genius, no doubt about that. But प्रॉब्लम यही है ना कि मैं बता रहा हूँ, बॉलीवुड ने एक चकाचौंध वाली इंडस्ट्री है, उसकी असलियत ना लोगों को पता ही नहीं अंदर की. जब वहां जाते हैं, अभी जाके धीरे धीरे खुल रहा है. मुझे याद है जब वो, मैं शायद आपको बताया था ना, मेरा दोस्त वो सलमान की मूवी देखना छोड़ दिया था 3 साल पहले, जब वो कार रोड वाला एक्सीडेंट हुआ था. और उस वक्त मैं फिर भी उसका साथ नहीं दिया था. अब रियलाइज करता हूँ कि जब कोई दूसरा मेरे साथ देने को रेडी नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसके मन पे अभी क्या चल रहा होगा, और या उसके मन पे क्या चल रहा था जब मैंने उसका साथ नहीं दिया था. आप कुछ कह रहे थे दीपक जी? सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया मैंने. मैं नहीं, डिस्टर्ब नहीं है, ऑनगोइंग कन्वर्सेशन है, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक द ब्यूटी अबाउट दिस, दैट्स व्हाई आई से इट्स अ डायलॉग है. अपने सिलेक्टिव लोगों को लाके उधर बातें नहीं करनी. और जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इसका प्लान नहीं किया. मैं तो सो रहा था, अचानक मैं उठ के देख रहा हूँ वरुण जी का शो है.
मैं बोला चलो लग जाओ, नींद नहीं आ रही है, आई एम इनटू पेन, आई एम टेकन अ टैबलेट, तो नींद नहीं आ रही है, तो चलो मैं बोला गुफ्तगू हो जाएगी या देख लेंगे क्या बात है, 4 नॉलेज की बातें दिमाग में जाएगी, व्हाटएवर आई विल डू। और दूसरी बात क्या है, एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा, whoever it is listening on the radio as well, have a telescopic view for a general problem. Have a telescopic view for a general problem. दूर की चीज हमको दिखाई नहीं देती है ना, तो हम टेलीस्कोप लगाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने टेलीस्कोप लगा के रखा था, ताकि दूर की चीजें एकदम नजदीक आके दिखे। तो लेट्स हैव अ टेलीस्कोपिक व्यू, इस पे ये करना, उस पे वो करना है। माइक्रोस्कोपिक व्यू कभी आ जाता है मालूम, जब आपके घर पे बात आती है ना, जब घर पर कुछ प्रॉब्लम है, देन वी गो इनटू द ग्रास रूट लेवल ऑफ दिस। इधर सीबीआई है, वो टेक केयर करने के लिए, बहुत सी अलग एजेंसीज है। अगर वो नहीं कर रही है, देयर इज वन मोर थिंग, जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग ने अभी आना चाहिए ऊपर, निकल के आना चाहिए, कम, बट कम विद अ पर्पस टू जस्टिफाई समथिंग एंड कम फॉर जस्टिस ओनली। भीड़ में आ गए ऐसा नहीं करो, आओ उधर प्रोटेस्ट करो। इन ऑल दिस यूरोप कंट्री इट हैपेंस द सेम वे, देयर इज अ मार्च पास्ट दैट गोस विदाउट हिंडरिंग एनीबॉडी, विदाउट, ये हमारे यहाँ पे जो होता है आंदोलन होता है, उसमें क्या होता है, पत्थरबाजी होती है, शटर बंद कर दिया, ये कर दिया, ये नहीं, यू आर स्पॉइलिंग द बिजनेस। वो तो व्हाट्स द, प्रोपेगेंडे वाले होते हैं जो नहीं प्रोपागेंडा वाले होते हैं, पॉलिटिकल लेकिन मोटिवेटेड होते ऑब्वियसली हैं। यहाँ पर भी वैसे ही होगा अगर आप बॉम्बे में करोगे तो, बट यू डोंट हैव टू डू इट इन बॉम्बे, यू हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। बॉम्बे में गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट कहाँ पर है, दिल्ली में। डू द मार्च पास इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो मोदी जी, किसी ने, मैंने आज सुना था कि मोदी जी अभी तक चुप क्यों है, अभी तक चुप क्यों है। हो सकता है वो चीजों को एनालाइज कर रहे, हो सकता है वो मजा ले रहे, हो सकता है वो उनका कोरिलेशन हो जाएगा। दीज आर ऑल थिंकिंग माइंड में हो सकता है। मैं वो सर मोदी जी Is के बारे में आज anybody, बोलूंगा मैं। जैसे अभी पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में बता रहा था मैं, वहां पे उन लोगों ने बताया कि अभिनंदन को क्यों छोड़ा था। उस वक्त तो सब पूरा न्यूज में चल गया था, सारी न्यूज चैनल में कि हाँ भाई पाकिस्तान बहुत पीसफुल कंट्री है, उन्होंने पीस रखने के लिए छोड़ा था। आज पता चला कि जब उनकी 9 बजे अटैक की बात हुई थी, तब वो कांप कांप के तब जाके छोड़ा था उन लोगों ने। और उस वक्त मोदी जी के भाषण में मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका वालों ने कहा है कि मिसाइल लेके पूरे रेडी हैं, तब उन लोगों ने छोड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मोदी जी ने क्लियरली agree कहा to था कि that? मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरा यही कहना है कि मोदी जी को डायरेक्टली इन द फ्रंट में लाने से ना, ये सिर्फ सारे जो कबाल है ना, दे विल डायरेक्टली अटैक ऑन हिम। तो मुझे यही लग रहा है कि जैसे पुलवामा के अटैक के रिप्लाई के लिए और उसके अभिनंदन के रिलीज के लिए जैसे उन्होंने शांति से बैकएंड में काम किया, इन्होंने काम किया, तो इसमें भी वो बैकएंड में काम कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रंट में लाने से उन पे डायरेक्ट अटैक होगा। मेरा वो उनका मेरा काम मेरा कर ये रहे हैं, मानना हमको है। हमारा काम करना है। एग्जैक्टली। So we are also, I never went on Twitter and I thought I would never go। तो कभी कभी मैं इसके लिए बोलता हूँ, कभी तैश में आके कुछ सबका वही हाल है। बोलना नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। आई केम ऑन ट्विटर, मैं बल्कि इनफैक्ट बहुत से लोगों को पूछा था कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, बट इन 2-3 days आई केम टू नो हाउ टू यूज इट। बट दैट्स व्हाट द थिंग इज, ट्विटर से, बिकॉज अगर मैं इंडिया में होता ना, आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव स्टेड Totally, देयर, एंड डन समथिंग और द अदर। From here, what I can do is I can go to the cinema, stop people going from the Bollywood, but there is not the full stop. ये तो बिगिनिंग है कि लोग जागरूक हुए हैं, अभी अभी लोग हिलना चालू हुए हैं, अभी तो उनको खड़े होना है, बाहर exactly. निकलना है। और देखो, वॉयलेंस कितना भी करोगे ना, नुकसान हम लोग का ही है। फिर किसी के दुकान पे आप पत्थर डालो या किसी के शहर पे पत्थर डालो या कुछ भी हो, फाइनेंशियली वी आर गोइंग टू गो डाउन, इकोनॉमिकली। और बेसिकली आपका प्रोटेस्ट भी बदनाम होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। Have a march past peace, have a candle, एग्जैक्टली। this thing. In Korea, I think so, if I've got a screen recording, I'll send you all.
In Korea, so many candles they have put up in the sky, making a face. Drones they have sent. Some 300 drones or 3,000 drones to make a face mask on the sky. जैसे चाइनीज कैंडल कैसे होते हैं ना, वैसे लाइट्स के उन्होंने बनाए थे फेस मास्क एंड टू शो अवेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस. So why can't we do something like this? Make something out of the box, something that will make an impact. And standing outside, I don't know how much the COVID impact is there, but I think so. If reading the general rules and maintaining that distance and going for the march past would not be the problem. Yeah, It should no, be an that ongoing definitely cycle. March. That's वही मैं बता रहा था ना, मैं वो रवि की बता रहा था, उनके ट्वीट देखता हूँ तो लग रहा है कि वो प्लान कर रहे हैं और भी मार्च प्लान कर रहे हैं. ऑलरेडी 3-4 जगह हो चुका है और आगे और भी जगह पे वो मार्च प्लान कर रहे हैं. तो मे बी ये जो है साइमल्टेनियसली मल्टीपल सिटीज में प्लान होने चाहिए और थोड़े और बड़े मार्च पैमाने पास्ट पे. ऐसा नहीं है कि एक ने कर दिया खत्म हो गया, आज एक दिन किया. इट शुड बी हैंडेड ओवर, लाइक जैसे एग्जैक्टली. ओलंपिक का टॉर्च है ना, एक से दूसरे एग्जैक्टली. के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है. जैसे हम लोगों एग्जैक्टली. ने वो एग्जैक्टली. एक दिन एग्जैक्ट 24 तो आवर्स का इसमें किया था ना हम इसमें लोगों ने 2 अक्टूबर को. इसमें मुझे लग रहा है ना, इसमें मुझे लग रहा है कि हमें और भी लीडर्स चाहिए जो कि सेपरेटली अलग अलग जगह पे Why do you साइमल्टेनियसली need कर a सकते हैं. leader? Why do you need a leader? We'll continue this. Oh, sorry, Give me अच्छा. one. sorry. Carry. All right, guys. So that's it for tonight. ये discussions और ऐसी और बातें continue रखेंगे हम रेडियो मिर्ची 1310 AM पर. मुझे आज बहुत सारे ideas मिल रहे हैं इन सबसे बात करते हुए कि Definitely. I think we should definitely continue this on my show as well. So I think मैं अपने शो के कुछ टाइम को split करूंगा जहां पर I think we will have candid conversation and then we'll also do some kind of community outreach as well. तो अगर मेरे पास कोई community outreach के लिए नहीं होगा तो I will open it up for general discussions and we will pick up some topics. अगले हफ्ते के लिए हमें कहा जैसे suggestion आ रहे थे love jihad. So we'll try to get some people who can talk more meticulously, more in a more organized manner. इसके बारे में बात करेंगे. But definitely stay tuned, stay connected. You're listening to RJ Varun on Radio Mirchi 1310 AM, the area का hottest radio station. अब आपको मिलेंगे हम Thursday को रात को 9 बजे on the same place, same channel, with some more guests and some more topics. On that note, thank you so much. Take care. Good night. Shabba khair. And I'll see you next Thursday. All right. Sorry, guys. Here we go. Can you guys hear me now? Yeah. Yes, All right. I can. Perfect. तो नहीं, प्रोटेस्ट मार्च के लिए एक तो कोई लीडर चाहिए ना जो कि अरेंज करे कि हाँ यहाँ पे करेंगे, फिर सबसे बात करे, एक इन्फॉर्मेशन भेज दे सबको कि हाँ इस डेट पे यहाँ पे इतने बजे से यहाँ से होगा. तो वो उस टाइप का लीडर है. ऐसा कुछ नहीं कि हाँ चलो मतलब एक लेकिन कुछ भी स्टार्टअप के लिए एक बंदा तो चाहिए. एक यूथ ग्रुप होता है ना, हमारे हर एक एरिया में यूथ ग्रुप होता है. एग्जैक्टली. तो उन लोग को लो, वो लीडर को मत लो जो अपने फायदा देखेंगे, बोलेंगे चलो भाई ये यंगस्टर आ गए, ये हमारा वोट की गिनती है. उनको मत लो. एक हमारे में से एक ऐसे है प्रशांत, एक हमारे ऐसे ही हैं प्रशांत कुमार हैं, वो पटना से हैं, जिन्होंने इंसाफ SSR करके एक मुहिम भी शुरू की हुई है. आई थिंक आई वुड लव टू हैव हिम नेक्स्ट शो पे. मैं उनको करता हूँ. उनकी पटना में तो ऑब्वियसली रीच है ही है, वो दिल्ली में भी करेंगे, हर जगह करेंगे, बट एट द सेम टाइम उनके साथ करनी सेना का भी सपोर्ट है. उनके बैक बिहाइंड देयर इज करनी सेना. ऑब्वियसली वो प्रशांत कुमार जो रिपब्लिक टीवी पे भी काफी बार जा चुके हैं और काफी सारी बातें कर चुके हैं और उन्होंने काफी सारी रेवलेशंस भी करी थी. तो आई थिंक आई वुड लव टू टॉक टू हिम कि अगर वो इस चीज को ओन करके इसके बारे में बात कर सके और इस मूवमेंट को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि अब आई थिंक टाइम इज ऑलमोस्ट देयर वेयर वी हैव टू गेट ऑन द रोड्स. Now this is the key. You have already unlocked the lock. वरुण जी, जैसे आपने एक चाबी निकाल दी, अभी इमीडिएटली निकाल दिया अपने ड्रॉवर से. तो ऐसे हमको कोई चाहिए जो निस्वार्थ काम करे. देखिए
सेवा करने से पहले ना ये सब लोग जितने भी लोग हैं ना, ये जिनको बॉलीवुड कहो या ये मिनिस्ट्री कहो, जो भी कहो, ये पहला देखते हैं मेवा कितना मिलेगा, वो हिसाब से सेवा करते हैं। नहीं, ट्रस्ट मी, जिनको हम भीष्म पितामह बोलते हैं आज की तारीख में पिक्चर का, आई एम बोल्ड इनफ टू टेल कि उन्होंने इतने साल, इतने महीने क्यों नहीं कुछ बोला, और अचानक आने के बाद में केबीसी में मैंने तो उनका शो ही नहीं देखा। वो इतने अच्छे अच्छे बातें करते थे। अभी सारे शोज की टीआरपी इतनी गिरी हुई है ना, सारे शोज की टीआरपी इतनी गिरी खाली टीआरपी गिरने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू शो द इफेक्ट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड इवन गोइंग टू द थिएटर्स एज वेल। सो टीआरपी कम हो गई है अभी हम। सर एक बात सॉरी कहना चाहूंगा, जब तक ये पॉलिटिकल विल पावर हमारी मजबूत नहीं होती, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए किसी एक दल को, मैं सबको छोड़ देता हूं, मोदी जी का नाम भी नहीं, कोई बात नहीं, मोदी जी का बड़े काम बहुत हैं, उनके साथ और लोग भी लगे हुए हैं और भी बहुत सारी चीजें, और हो भी रहा है वहां से। सिर्फ एक आदमी अगर ठान लेना, सिर्फ एक आदमी मुंबई की या महाराष्ट्र की राजनीति में जो बहुत सक्रिय हैं, वो है शरद पवार। अगर वो चाहे तो जो भी ये सिचुएशन है, जो भी कहानी है, उसको एक ही दिन में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन महाराष्ट्र, इनफैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स आई वुड से। वो बहुत बहुत जबरदस्त शक्तिशाली इंसान है, किंग मेकर हैं, और काफी चीजें उनके साथ हैं जो वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट है तो वो क्यों करेंगे कुछ भी। एक छोटी सी कविता काफी टाइम से मैं सुनाना चाह रहा था, अगर बात वहां छिड़ गई है मुंबई पे, तो मुंबई कविता जरूर सुनाऊंगा, तो अगर इजाजत है तो वरुण जी बोल दूं? बिल्कुल आप ही का है। ये मुंबई है मेरी जान, ये मुंबई है मेरी जान, किसी के बाप की जागीर, मेरे देश की तस्वीर का हिस्सा भर है, कोई अलग से तस्वीर नहीं। ये कोई राज सिंहासन नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ये लोकतंत्र है जहां 5 साल बाद सब कुछ बदलता है। जिसको चाहो भगा दोगे यहां से, जिसे चाहो पीट दोगे, देखते हैं ऐसे कैसे अगला इलेक्शन जीत लोगे। सिर्फ एक जांच मांगी थी हमने और तुमने गंद मचा दिया, सिर्फ एक जांच मांगी थी हमने और तुमने गंद मचा दिया, ऐसा गदर मचाया कि पीएमओ तक हिला दिया। जब वो प्रधान सेवक हैं हमारे, जब वो प्रधान सेवक हैं हमारे, तो तुम भी तो सेवक हो हमारे। जब वो प्रधान सेवक हैं तो तुम भी तो सेवक हो हमारे। चुना तुम्हें हमने सेवा के लिए, चुना तुम्हें हमने सेवा के लिए, ऊपर से नहीं टपके प्यारे, ऊपर से नहीं टपके प्यारे। थैंक यू। चीजें समझनी होंगी उनको। बिल्कुल, बट वही आजकल बहुत मुश्किल है, रमन जी, सबके अपने अपने पर्सनल एजेंडाज, और क्या एजेंडाज हैं, कई बार तो हमें यही नहीं पता लगता कि एजेंडा है क्या यार। व्हाई समथिंग इज बिगर देन द कंट्री, व्हाई इज समथिंग बिगर देन द इतने लोग इसकी वजह से इम्पैक्टेड हैं ग्लोबली। अब स्पेशली अगर सिर्फ ये सुशांत का लेके चले, राइट, ग्लोबली लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। वरुण जी, हमने परिवर्तन की लौ उठा जला ली है, हमने परिवर्तन की लौ जला ली है, और ये मुशाल हाथों में उठा ली है। अगर संवारेंगे आज तो कल भी संवर जाएगा, अगर संवारेंगे आज तो कल भी संवर जाएगा, लेकिन निकल गया ये आज तो कल नहीं आएगा। ये चीज समझनी होगी। फाइट तो चलती रहेगी, करनी ही होगी, अदरवाइज जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। हो सकता है मेरी लिमिटेशंस हो, आपकी लिमिटेशंस हो, दीपक जी की लिमिटेशंस, हम सबकी लिमिटेशंस है, कहीं ना कहीं पे हम लोग बंधे हुए हैं अपनी अपनी जिम्मेवारियों से, दायरों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज नहीं उठाएंगे। इतना हक है हमें कि हम बोल सकें। हमने मांगा क्या मांगा? एक मौत की जांच तो मांगी थी। By the way, Varun, tomorrow कल विभोर का नेक्स्ट बिल का हियरिंग है, राइट? इस टाइम पे फ्राइडे हो चुका है इंडिया में, राइट। सो अब आज हियरिंग है ना शायद? हाँ जी। अभी मुझे तो कुछ और ही पता चला कि मुझे किसी ने उसके डैड का नंबर दिया था, लुक्स लाइक वो कोई और ही फेक ही निकला, इट इज नॉट हिज डैड्स नंबर। तो मैं पता नहीं, वंस इन अ वाइल जो भी किसी से बात हो रही थी वो कौन था, तो आई हैव नो क्लू आजकल हो क्या रहा है यहाँ पर,
people are trying to kind of do crazy things all around. तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या है आजकल। तो मैं वही बता रहा हूँ, अपने घर पे बस घर पे बैठा हूँ, बस वही मुझे थोड़ा सेफ फील होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ अपने घर वालों से। अदर देन दैट आज की डेट में कौन क्या कहाँ कैसे कर रहा है, आई हैव नो क्लू। और जो टाइगर से जो कांटेक्ट है वो टाइगर का देखो, टाइगर अपना क्या बोलूँ मैं, ही इज रियली as much as scared कहो, but at the same time he is a very brave guy, दोनों चीजें हैं उसमें। he is not a timid, कोई छोटा तो बच्चा नहीं है, वो बहुत बहुत दरिया दिल बंदा है। and he will definitely not take anything against his family, which nobody will। तो फैमिली को अगर बीच में डालेंगे तो आई थिंक वो ऐसा शेर है जो सबको फाड़ देगा, क्योंकि फैमिली नहीं यार, तुम पर्सनल पॉट शॉट्स लो करो। एंड विभोर के साथ भी मेरा जो थोड़ा बहुत जो हुआ था, राइट, उसने जब फालतू की कुछ बातें ऐसी बोली थी फैमिली से, वो नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। एग्जैक्टली नहीं, वो तो टाइगर के साथ हो रहा है कि टाइगर के कुछ साथ बात करनी है ना तो करो जिसने करनी है, पर टाइगर की फैमिली को यार कम ऑन, वो थोड़ा हिटिंग बिलो द बेल्ट हो जाता है। मुझे पता नहीं क्या हुआ वो फैमिली वाला, मतलब आई थिंक आई मिस सम ट्विटर और समथिंग। ट्विटर पे लगे हुए हैं, राइट, बहुत कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट, उसकी फैमिली को, उसके कंपनीज को, सबको टैग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पता नहीं एंटी नेशनल ये वो। और पीपल नीड टू कंसिडर सम रिस्पेक्ट कि वो एक डिफरेंट कंट्री में बैठा है, उसके अपनी भी कुछ होंगी गाइडलाइंस जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी को भी किसी भी तरह से कुछ भी बोल दो। और कंपनी यही वही मैं सोच रहा हूँ कि आप मतलब कोई बंदा है, अगर आपसे नहीं भी सहमति करता है तो अलग तरह से लड़ा, कम से कम लड़ने दो भाई। मतलब अगर तुम्हें नहीं समझती बातों में बात करो, बट अटैकिंग, कंपनी को अटैक करना, फैमिली को अटैक करना, इट्स हॉरिबल। कभी कभी सीरियसली ऐसा लगता है कि ये एसएसआरियन है या वो बॉलीवुड वालों की तरफ से हैं। सर कुछ भी मैं कहूंगा इस टाइम पे, पता क्या, मैं एक चीज बताता हूँ। आज की डेट में हम सब जानते हैं रिपब्लिक का ज्यादा, वरुण जी एक मिनट, हाँ जी, इतना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत देना कि वो फटने को तैयार हो जाए कोई चीज पे। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि टेलीस्कोपिक व्यू रखो, राइट, लुक थिंग्स, देखो हो रहा है कुछ चीज, अब उसमें यू विल गो इन अगेन, यू टेकिंग अ माइक्रोस्कोपिक लुक। वो क्या हुआ था ट्विटर में, क्या, सी you're fighting for justice, you know that he just give a little synopsis। बंदा ब्रेव है, डेयरिंग बाज, दिल से दिल लगा देगा, जान से जान लगा देगा। अब बट लेकिन अब अटैक होता है, नहीं जब किसी अपने पे अटैक होता है तो थोड़ा तो दुख होता ही है। No, see, there will be little bit of consequences coming in, and you have to accept that. We are not कोई चीटी नहीं मार रहे भैया। इन लोगों ने कितने इंसानों को हजम कर लिया ये सिस्टम ने, और हमको पता तक भी नहीं। अभी हमारी आंखें खुली, जैसे आप पहले वो तो ऑफ कोर्स है कि बहुत पावरफुल लोगों के। मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट करना चाहूंगा कि अगर ये उनकी तरफ से आता जो एक्चुअल में कल्प्रिट्स हैं, राइट, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, अगर उनसे आता ना थ्रेट, तो हम समझ लेते कि चलो यार हम एक बहुत बड़ी फाइट करने के लिए निकले थे, ये सब कुछ तो चल। यार ये तो आपस में ही अपने ही लोग जिनको हम एसएसआर वॉरियर्स कहते हैं, हम क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए यार, हम क्यों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? तो वो बस दुख देता है। और आ भी गए, मैं कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लो, थॉट प्रोसेस कह लो, कुछ भी, वो भी मानता हूं मैं, अपने घर में ही लोग आपस में भाई बहनों में होता है। बट यहां पर वो इंसान जो उसी फाइट को अपनी तरफ से लड़ रहा है, तुम अपनी तरफ से लड़ो, और अगर करना भी है तो 1-on-1 आओ। जैसे अभी यहाँ पर कोई तो मैसेज कर रहा था, मैं आई थिंक बेपोस्लाइम या कोई तो यहाँ पर मैसेज कर रहा था कि इनको इकट्ठे लाओ और रिजॉल्व करो। पब्लिकली क्यों करना? पब्लिकली ऑफलाइन करके आपस में इन दोनों की बात करके इनको आपस में खत्म करना चाहिए। और हम बाहर आके हमें अपनी वीकनेस नहीं दिखानी चाहिए लोगों को, हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। पर ये लोग आई डोंट नो, आई मीन बिना मतलब के, बिना किसी बेसिस के एक दूसरे के ऊपर पॉट शॉट, फैमिली को इन्वॉल्व, ये बचपने की चीजें लगती है मुझे। इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए थी हमें कि हम इन चीजों को ना लाए ऐसे।
but unfortunately situation आ गई है, but we still have to continue, you know, this fight has to go on, right? इसको थोड़ी ना हम इन चीजों के पीछे खराब कर देंगे। Exactly. Yeah. Yeah. Anyway, मुश्किल बात है, लोगों को अचार खाने की आदत इतनी पड़ चुकी है कि हर चीज के अंदर फीकी डाल देगी तो बोलेगे यार मजा नहीं आ रहा, अचार कहाँ है माँ। आपको तो ये इसी पे आपको एक और छोटा सा मैं अभी देता हूँ एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी ये जो बात बोली ना, थोड़ी देर पहले की बात है, जब मैं वो बच्चों के साथ बच्चे नहीं, जब वो हमारे कम्युनिटी लीडर भी आ गए थे, तब दोनों थे वहां पर। कोई महाशय आए और वहां कहते हैं कि वो क्या हो गया, बड़े कम लोग देख रहे हैं आपको। क्या मतलब है यार, कम लोग देख रहे हैं से उससे मतलब मैं यहाँ लोगों को देखने दिखाने के लिए नहीं आया, यहाँ मैं लोगों से कनेक्ट होने आया हूँ। उन बच्चों के लिए सोचो, वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, यू नो, यू नीड टू सपोर्ट देम। और अभी जैसे एक और अब ये महाशय आए हैं हमारे, अभी बात करते करते मेरे को एक ऑन करके, वरुण यू गोना रिग्रेट योर ब्लाइंडली सपोर्टिंग फैमिली। मैं 50 बार बोल चुका हूँ कि ना तो मैं किसी फैमिली के साथ हूँ, ना मैं किसी फैमिली के अगेंस्ट हूँ। लोग समझते क्यों नहीं? मैं यहाँ पर सुशांत के लिए आया हूँ। सुशांत को जिसने भी मारा है, जो भी वो, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो फैमिली नहीं हो, आई विल कंटिन्यू टू फाइट, आई विल गो अगेंस्ट एवरीवन। ये किसने बोला कि मैं फैमिली बट उसमें मैं सोच रहा था, मैं अपना पॉइंट रख ही दूं। मैं काफी दिनों सोच रहा था कि इम्पॉसिबल, इट्स हार्ड, इवन आई डोंट बिलीव कि फैमिली वुड बी इन्वॉल्व्ड। बट एक होता है ना कि मुझे लगता है कि वरुण वो विभोर को क्या न्यूज मिली होगी कि जैसे अभी जैसे वो टाइगर को थ्रेट मिल रहा है, तो लोग उसकी फैमिली को भी टैग कर रहे हैं। सो दे वांट द फैमिली टू टॉक टू टाइगर टू स्टॉप हिम। सो ऐसे ही जब द वर्ल्ड पीपल, राइट, द पीपल वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, कि जब वो सुशांत को थ्रेट कर रहे होंगे, राइट, दे माइट हैव थ्रेटेंड सिस्टर एज वेल, दे माइट हैव थ्रेटेंड मितु दी, and they might have told Mitudi to stop Sushant. And then Mitudi might have spoken to Sushant ki boss stop kar lo, these people are very bad, they can do. And this is what could have happened. I don't think ki sister would have been involved in the murder anyway. सबसे बड़ी फनी बात इसमें क्या है धीरज जी, जो मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। वो बेचारी सिस्टर, अगेन लोग कहेंगे कि मैं बेचारा बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर आप ये सोचो, वो सिस्टर जो एक डिफरेंट कंट्री में बैठी है, राइट, यहाँ बैठी है, जिसको रात के हमारे 1:30 या 2 बजे थे जब ये न्यूज आती है कि उसका भाई की डेथ हो गई। आप ये कह रहे हो कि यू नो वो शी वाज पार्ट ऑफ द क्राइम। यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। और दूसरा एक और जो मैंने नई चीज सुनने को मिली मुझे, ये कल या परसों मैंने सुनी कि जी जो ब्रदर इन लॉ है वो बेसिकली उन्होंने तो देखा भी था जिस टाइम पे हुआ। अरे यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर ना FBI और जो US की एजेंसीज हैं, ये बच्चों की एजेंसी नहीं है। यहाँ पर कुछ नेटवर्क पे कुछ अनयूजुअल होगा ना, उसी मोमेंट पे, यू नो, अगले दिन भी नहीं मैं कहूंगा, उसी मोमेंट पे पहले तो थ्रॉटल तो जो होगा सो होगा। सेकंड थिंग इज देयर विल बी कॉप्स आउटसाइड योर होम। ये एग्जैक्टली। पर सिंपल सी बताओ ना, हर कोई यही सोचता है डोंट गो टू डार्क वेब, डोंट गो टू, व्हाई? क्योंकि सब मॉनिटर कर रहा है, देयर आर पीपल हु आर मॉनिटरिंग इट। सिमिलरली देयर आर लाइक रॉ एंड अदर गाइस हु आर मॉनिटरिंग इट। So अगर कुछ रन किया होगा तो they will know it, they would already found it, right. तो yeah, sister का involve, मुझे बस इतना सा लगता है कि उनका यही रहा होगा कि those guys would have threatened Mitudi as well, and then Mitudi might have spoken to Sushant to stop this because these guys are powerful. She might have, it's simple right. thing, right? So that is only thing that could have happened. कर सकते हैं क्योंकि हम लोग पार्ट नहीं थे इस चीज के, हमें नहीं पता, हम स्पेकुलेशन पे। बट मैं सिर्फ एक चीज जो अवॉइड अप करना चाहता हूँ, यस दीपक जी, जो मैं स्पेकुलेशन को खत्म करना चाहता हूँ वो मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ, स्पेकुलेशंस ना हम आपस में घर में बैठ के बात करें वो ज्यादा बेटर रहती है। अगर हम ऑनलाइन आके भी स्पेकुलेशंस की बात करेंगे, राइट, किसी का भी लोग बहुत मजाक बना रहे हैं इस चीज को, मैं बता रहा हूँ कुछ बहुत ही बड़े बड़े ऐसे नाम और लोग हैं जो इन स्पेकुलेशंस को थ्योरीज बना रहे हैं और उन थ्योरीज को आगे बेच रहे हैं, और वो जो फॉलोअर्स हैं वो उनको लेके वो आगे उसको और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। बोले
बस यही है। मैं इस पे एक और बात याद आ गई कि मैंने दिए कच्चे चावल, मुझे वापस मिली मसालेदार खिचड़ी। समझ गए इस बात को? मैंने तो दिए थे चावल, ऐसे बांटे थे, भाई लेके जा, जो बच जाएगा वापस लेकर आना। आने के टाइम पे बोला दीपक भाई मसालेदार खिचड़ी आई। लाइक ये नहीं कि बाय द टाइम टेक टर्न एंड कम बैक टू यू, इट्स नॉट द सेम प्रोडक्ट। या तो पहली बात तो ये पूछूंगा, अगर आपको रात को उठा के ये पूछा जाए कि कल रात को आपकी नींद कैसी रही, बोले अरे बहुत मजे में रही। अच्छा तेरे को मालूम है बाजू वाले के यहाँ क्या हुआ? आप बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। सडनली योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग, यार मैं तो सोया था, आवाज नहीं आई, कुछ नहीं है, क्या हुआ था, क्या हुआ था? बाजू वाले का घर ही लॉक है, आपको तो मालूम भी नहीं। फिर आके कोई और पूछता है आपको, बाजू वाले मालूम है क्या हुआ था? बोले यार पता नहीं यार, वो लोग तो घर पे शायद नहीं। अच्छा नहीं पता नहीं आपको? अच्छा अच्छा। तो पहली बात तो आपका माइंड तभी ट्रिगर हो गया कि जब भी आपको किसी ने पूछा बाजू वाले के घर पे रात को क्या हुआ था। No, you start making stories. अच्छा शाम को ऐसी आवाज आई थी, ऐसा हुआ था. So we start making pictures. Why do we make picture unless and until somebody else from that house doesn't come out and tell you this is what happened? Exactly. कि मारामारी हुई थी या जगराता हुआ था, वो बताएंगे आवाज किस संदर्भ में हो रही थी. So to sit at the third seat and to conclude what these two people must have done is quite wrong. Quite and completely wrong to think. So जैसे वरुण जी ने कहा, टेल इन, जैसे मैंने कहा ना, लोगों को पोस्टमार्टम करके दिखाना चाहिए. वरुण जी का यही बोलने का मतलब है, इफ evidence prove that somebody is involved, he will always go with the evidence. He will not go with the empathy or sympathy. It is hardcore black and white. दूध का दूध, पानी का पानी. वो अभी तक नहीं हुआ है, सब मिक्स है, साइड में पड़ा है, कोई लस्सी बना रहा है, कोई रायता फैला रहा है, कोई क्या कर रहा है. अरे शांत हो जाओ. Everybody has got the intelligence mind. Yes. So all I would say is, you have got so much in your life to do. Focus that. जैसे वरुण जी ने अभी कहा कि मैं काम से जाके आता हूँ, फिर घर से फिर मेरे को ये सोशल मीडिया. So there are a lot of things in that we need to have also a positive vibe, positive thinking, positive attitude होना चाहिए हर तरफ से. तो वो चीज सबको ये लाएगा. क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी. जैसी आप स्माइल करो, सर जब मेरा मुंह सूजा हुआ है, बट आई एम स्टिल स्माइलिंग, आई एम टेकिंग एज मच एज आई कैन, लेट मी सी हाउ मच आई कैन टॉलरेट. एक मौत से तो बेकार नहीं है ना दर्द, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, बट हाउ मच कैन वी बेयर. सो बेयर टॉलरेशन पॉइंट हमारा होना चाहिए. वी डोंट हैव वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉइंट, बट वी हैव बिग माउथ. जबान किसको दी है इस पूरे जो ग्लोब में? जबान किसको दी है? खाली इंसान है जो जिसके पास जबान दी है. उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, क्योंकि बोलने की आजादी दी. एंड दीज पीपल आर लाइक रोडेंट्स. ये जो ट्विटर पे जो बेबकवास करते हैं ना, ये एसएसआरियन करके ज्वाइन किए हैं, ये भी इनके भेजे हुए टट्टू है. अगर आपको मैं 500 पाउंड दे दूंगा और बोलूंगा महीने भर के लिए आपको खाली ट्वीट करते रहना ऐसा ऐसा, यू विल हैप्पीली डू इट. व्हाट अरे आप तो 500 पाउंड की बात कर रहे हो. यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे के भी, दे आर जस्ट ब्लाइंड. वो कहते हैं ना अंधभक्त जिसे कहते हैं, वो हैं ऐसे. बस उनको बोल दो, ना देखेंगे आओ ना ताओ. और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे भी लगे हुए थे, क्योंकि वो थोड़े जेन्युइन लगे, नाम आईडीज. मैंने उनसे बात करी, उनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ बात करने को ही नहीं है. और अब आज की डेट में वो अब थोड़ा बंद हो गए, क्योंकि उनको दिख गया कि यार कोई लॉजिक था नहीं, बिना मतलब के तुम किसी को भी बदनाम करी जाओ. पर हमारे पास, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सैफरन है, चाहे वो, यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक के पास जाके अपनी कोई समझाएं या उनसे पूछें. लोगों को अपनी लगानी चाहिए यार, अपना दिमाग यूज करो. एंड ट्रस्ट ओनली द पर्सन यू रियली वांट टू ट्रस्ट. और अगर किसी से प्रॉब्लम है, या तो फॉलो ना करो, अगर करना है तो प्लीज उससे जाके क्लैरिफाई करो. यार ही इज पार्ट ऑफ योर फैमिली, जाओ बात करो. आई एम नेवर शाइंग अवे. कोई भी शाय नहीं करेगा, बात करेंगे यार. अटैकिंग इज नॉट गुड. अटैकिंग इज. और प्लस क्या होता है मालूम है, जो पब्लिक बोल रही है उनको लाके सामने बिठा के बात करो. एंड व्हाट वरुण जी सेड इज एब्सोल्युटली राइट, दैट दिस इज नॉट वेयर यू हैव टू. जैसे घर में कुछ झगड़ा होता है, हम क्या उधर टीवी कैमरा लगा देते हैं क्या? Exactly. चलो लाइव टेलीकास्ट करेंगे और ये करेंगे. सो इट हैज टू बी come to an under consent where they agree with each other whether they want to be a part of each other further or not. Whereas I think so I have heard very clearly कि जो भी हो, मैं विभोर का दोस्त रहूंगा,
जो उसने बोला है मैं उस बात पे नहीं एग्री करता हूँ। जैसे कभी कभी बोला जाता है कि किसी से सख्त बात करने से इसका मतलब ये नहीं आप उसके अगेंस्ट हो गए हो या उसके विपरीत बात कर रहे हो, ठीक है ना। कभी कभी वो होता है एक बात ऐसा बोलना कि किधर किधर आपको स्टर्न होना पड़ता है, बिकॉज यू डोंट नो वरुण जी शेयरिंग हिज प्लेटफॉर्म वेर हिज क्रेडिबिलिटी इज ऑन एट स्टेक। कभी आपका कोई चीज ऐसा दांव पे लगा दो और उस पर खड़े रह के पब्लिक को मजे करने दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। मैं ये आप पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल आप लोगों को बोल रहा हूँ। इट इज फॉर एवरीबडी, नॉट एक फॉर अ सिंगल पर्सन। लास्ट कमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली 11:30 बज गए और मेरे को घर भी अभी जाना है। नो प्रॉब्लम। यहाँ सूरज हाँ जी, मुझे भी सोने दो। हाँ आप भी बहुत लेट हो। एक लास्ट कमेंट में जरूर बोलना चाहूंगा, राइट। जैसे धीरज जी ईस्ट कोस्ट में है, हाँ राइट, इस हाँ टाइम पे हाँ कितने 11:30 बजे, 2:30 12:30 बजे, ढाई ढाई। 2:30 बज रहे हैं, बट ये जाग रहे हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये अपना टाइम दे रहे हैं, इस मूवमेंट को ये टाइम दे रहे हैं। ये मुझे नहीं दे रहे, ये आपको नहीं दे रहे, ये इस मूवमेंट के लिए बात करने के लिए आए, क्योंकि शायद उनको खुद भी इतना रेस्टलेस, इतना इमोशनली ड्रेन। आप बैठे हैं, आपके मुंह दर्द है और आप लोग बैठे हैं। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरा शो खत्म हो गया, पर मैं उसके बाद भी यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ये हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है जहां पर हम आपस में 3 दोस्त कोई बैठ के बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस मूवमेंट, दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर दिस मूवमेंट कि सब लोगों को एक साथ जुड़ के चलना है। ये फालतू की बातें बस करें अब लोग और फोकस ऑन द मेन गोल। एंड प्लीज, अगर कोई लड़ भी रहा है ना, इफ यू कैनॉट फिक्स दैट प्रॉब्लम, उसको बढ़ाओ मत, उसके अंदर कॉमेंट ही मत करो, उसको रहने दो। इग्नोर करोगे ना, आई थिंक आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी। बट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं बस एक 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 आखिरी चीज ये बताना चाह रहा था कि अभी मैं जैसे लास्ट टाइम बता रहा था, राइट, जो हम फाइट कर रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, इसमें बॉलीवुड है, पॉलिटिक्स है, दुबई है और तो मीडिया है। तो और मैं बता रहा था कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो मीडिया के क्या कह रहे हैं और क्या सच है, जो फेक न्यूज है वो कुछ करते हैं और ट्विटर पे डालते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि हमारे एसएसआरएन्स में इतने लोग हैं जो चीजें निकाल निकाल के, सबूत निकाल निकाल के दे रहे हैं। तो आई थिंक अगर वो भी उन लोगों को ज्वाइन करें और स्टार्ट हेल्पिंग मेकिंग वीडियोस कि ये मीडिया ने क्या फेक न्यूज डाला और क्या था और क्या निकाला, तो उससे लोगों में ज्यादा जागरूकता जागेगी, उनको ज्यादा पता चलेगा कि मीडिया किस तरह से फेक न्यूज पेडलिंग कर रहे हैं अभी। तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए जनता का कि दे शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियोस, गेट सम प्रूफ्स, हाँ, इतना गेट सम स्क्रीनशॉट हियर, स्क्रीनशॉट देयर। छोटे लोगों पे जो इतना एफर्ट और टाइम खर्च कर रहे हो ना यार, जाके एक्चुअल वाले काम पे करो। नरेटिव्स जो दे रहे हैं, जो जिनके पास मीडिया हाउसेस जो फालतू के फेक चीजों को कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करो। हिम्मत है वो करने में ज्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट स्पेंड करो, not on people. And make YouTube video, monetize it, that's okay, but make YouTube videos, expose them. Yeah. Exposure will also not come that easy. जैसे मेरे I like your idea, but the thing is it has to be implemented. वैसे ही मेरे पास एक और आइडिया है जिसको मैं चाहता हूँ मैं इम्प्लीमेंट करूँ, बट आई नीड एन एनोनिमस ग्रुप। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है ना, वी हैव टू टारगेट दैट। जैसे इन लोग ने एक एक यूट्यूबर को अंदर लेके गिरफ्तार किया ना, हमको इनकी एक एक पिक्चर रिलीज के पहले वेट करना है और इनका पूरा आगे पीछे काला पीला चिट्ठा सब बताना है। फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसका मेटा डेटा देखो, ऑफलाइन बात करेंगे, बताओ ये है। ऑफलाइन जरूर लेट्स नॉट, जो करेंगे एग्जैक्टली ऐसे नाम लेके आई थिंक इट्स नॉट गुड। जोर से करेंगे और धमाके से करेंगे। और मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो रहा है। ऑलरेडी एक ग्रुप है ट्विटर पे, जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके, और ऐसे नॉर्मल यूजर्स भी हैं, नॉर्मल लोग भी हैं जो डिटेल भेजते हैं। मैं ट्विटर पे देखते रहता हूँ, लोग वीडियोस डालते रहते हैं, डिटेल्स भेजते रहते हैं कि इसका इसने यही किया, उसने वहां पे वो किया था। तो ये सब डिटेल्स ऑलरेडी ट्विटर पे भी बहुत है, बट मे बी एक इकट्ठा करके या फिर ज्यादा एक्सपोनेंशियली ज्यादा लोग ज्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाए उसके ऊपर, और ज्यादा बताएं लोगों को। करेक्ट। व्हाट इज दैट नेम ऑफ दैट ऑन द ट्विटर? जेम्स ऑफ बॉलीवुड। James of Bollywood. I'll just go and see how. GEMS, James.
Okay, James. Okay, no problem. ठीक है And nice चलो meeting you, Dheeraj ji. I think Yeah. so we should take off from each other. It was a healthy conversation with all both of you and anybody who was around. And all I would say is, if I must have spoken unknowingly something wrong, apologize. But anyway, it was really always a good and healthy conversation. And मेरा एक ही motive है अभी to spread positivity, to energize people, energy ला. Exactly. फ्री में मिलता है, फ्री में बांटो. जैसे हम लोग कहते हैं ना अनुलोम विलोम करना. Get some more vitamin D. Vitamin D might be helping in your corona fight. So get some more vitamin D. Vitamin D, sunlight is there. Exactly. I always try to get it as much as possible. This country does not have it. But wherever I get, I don't take tablets. I am against allopathy. But in severe conditions, you do have to take it. But as much as I can practice natural things on me, that is much beneficial, which I don't suggest to anybody because उसके लिए बहुत हिम्मत और हौसला लगता है वो करने के लिए. विटामिन डी सी सब हमारे में है, निकालेंगे बाहर और सबको जागृत करेंगे. No problem. Exactly. Take care. Keep smiling. Always. Keep smiling. Thank you. Thank you. Jai- Thank you. Take care. Jai Hind. Jai Hind.